Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Number 65. मैम मुकेश सर ने करवा दी थी। मुझे मालूम, मतलब थोड़ा बच्चा हुआ इससे मैं आपको पढ़ा And the legend of Northland. बेटा The legend of Northland. थोड़ा जोर से बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। The legend of Northland. हाँ बेटा मैं वो तो करवा दे। अब देखो से the legend is the story। तो इस स्टोरी क्या नॉर्थलैंड की है। वहां पे एक बार सेंट पीटर जो है ना वो नीचे धरती की तरफ आए थे, तो पूरा दुनिया को घूम घूम कर क्या करते थे, अपने टीचिंग्स दे रहे थे, मीन्स वो प्रवचन वगैरह देते हैं ना, ऐसे वो दे रहे थे। अब वो दे रहे थे ना तो उनको घूम घूम के दे रहे थे, तो कभी उनको खाना मिले ना मिले ऐसा होता था। तो एक दो दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनको भूख लगी, तो कह रहे हैं कि भाई अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कि भाई दूर दूर वहां नॉर्थलैंड के अंदर, बराबर है, when the hours of the days are very few, यानी कि जहां मतलब कि दिन और रात मतलब कि बहुत जल्दी दिन ढल जाता था, अंधेरा हो जाता था और ठंड थी इस वजह से, and the nights are so long in winter, और जैसे विंटर का मंथ था तो अपने को मालूम है रात लंबी होती है दिन छोटा होता है, so you can say that when the hours of the days are very few, जैसे नॉर्मल तो 24 आवर्स है तो 24 आवर्स ही होंगे, लेकिन क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है, and that they cannot sleep then too, और ये ठंड की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, बिकॉज ठंड इतनी ज्यादा थी। जब तक आप सो रहे होते हो, ठंड हो रही होती है, जब तक आप अपनी बॉडी को कवर करते हो, जब तक आपके पैर गर्म नहीं होते, तब तक आप क्या बोलते हो कि आपको नींद नहीं आती। फिर where the harness the swift reindeer to the sledges when it's cold, वहाँ पे harness मतलब होता है attach, जोड़ना, कार्ड, जैसे वहाँ पे आप स्पोर्ट्स वॉक जहाँ चलाओगे ना, वहाँ पे आप डॉग्स को देखोगे, रेंडियर्स को देखोगे कि उसको है ना कार्ड यानी कि गाड़ा टाइप होता है, स्लेज मींस वो लोग दौड़ते हैं टू के पैर्स के अंदर, और वहाँ पे लगाम होती है और वो स्लेज होता है, वहाँ पे व्हील नहीं होता, इट इज समवॉट वो जैसे स्केट करते हैं उस तरीके का होता है। और एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप, क्योंकि बेयर्स कप क्यों, क्योंकि उन्होंने मोटे मोटे गरम कपड़े पहन रखे फर वाले, तो बेयर कप जैसे यानी कि वो बीच बच्चे होते हैं जैसे फरी फरी से जैसे वो लगने लगते हैं इन देयर फनी फरी क्लोथ, अजीबोगरीब लगे। देखो अभी तो बारिश का सीजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने अहमदाबाद गुजरात में देखा जाए तो 8 महीने का गर्मी रहता है, बराबर है, 1 महीने की सर्दी, 1 महीने की बारिश। बारिश में you can say that few days, the days that you can count on your tips of your finger। बाकी का जो you कह सकते हो कि जो 1 month या वो है ना, वो सीजन ऐसा होता है कि you can खुशनुमा सीजन होता है कि आपको गर्मी नहीं लगती तो आपको सर्दी भी नहीं लगती उस टाइप पे। They tell them a curious story, spectacular, एक अजीबोगरीब स्टोरी। हर जगह आप जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोरी तो आपको मिल ही जाती है, तो यहाँ की भी एक अजीबोगरीब स्टोरी है। I don't believe it's true, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच है। मुझे नहीं लगता कि सच है, मगर लोग बोलते हैं, बराबर, मगर लोग बोलते हैं, and yet you will learn a lesson, और यहाँ हो सकता है कि इसमें से आपको एक मॉरल लेसन, एक अच्छी बात, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। Now, if I tell you tell the tale, अगर मैं आपको ये स्टोरी कहता हूँ और शायद उसमें से कोई पता लेसन आप सीख पाओगे। सेंट पीटर, एक बार बेचारे वो सेंट पीटर जब लिव इन द वर्ल्ड, यानी कि इस धरती पर वो जब रहते थे, यानी कि आए थे, एंड टॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और जैसे मैंने आपको बोला कि वो प्रीच करते हुए या पूरे दुनिया के अंदर अपने प्रवचन देते हुए घूम रहे थे,
जैसे कि वो हमेशा करते थे, आपको मालूम है उसके बारे में। He came to the door of a cottage. एक कॉटेज यानी कि एक छोटा सा घर होता है, किया टाइप्स, वहां पर वो आके खड़े इन द ट्रैवलिंग ग्राउंड, जब वो धरती पे घूम रहे होते, धरती पे होते, वहां पे वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग अ केक, वहां पे एक बूढ़ी औरत या फिर एक औरत जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं, वो केक बना रही थी। देयर एंड मेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको बेक करने लगे। हर्थ मतलब फर्नेस, भट्टी, उसमें बेक कर रहे थे। एंड बीइंग फेट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और वो पूरा उन्होंने मतलब कि व्रत की वजह से, फास्ट की वजह से सेंट पीटर को बहुत भूख लग रही थी, तो लगभग बेहोशी की हालत में थे, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, तकरीबन पूरा दिन ही खत्म हो गया था। यहाँ पर from a store of cakes, वो उसको बोलते थे तेरे जो बेकरी है, स्टोर केक का जो स्टोर है, मुझे एक सिंगल केक दे, छोटा सा, एक छोटा सा केक तू मुझको दे दे। तो शी मेड अ वेरी, तो उसमें से तुम एक छोटा सा एक सिंगल पीस तू मेरे को दे दे। तो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एट इट्स बेकिंग late she looked at it and thought it seemed too large to give up. तो क्या करती, एक छोटा सा केक बनाती, उसको फिर बेक करती है, बेक करने के लिए रख देती है। फिर वो जब बेक होकर रेडी होता है ना, तो वो तो बहुत बड़ा केक, इतना बड़ा केक कोई देना चाहिए नहीं, फिर तो ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए, इसको तो बेक अच्छे तो अच्छा। अब वो पूरा दिन हो गया है, जस्ट सी दैट पूरा दिन खत्म होने को आ रहा है, बराबर है, वहां पे अभी तक कोई कस्टमर नहीं है, सिर्फ आए हैं तो सेंट पीटर आए हैं, अब तक उसका कोई केक बिका भी नहीं है, बराबर है। उसके अंदर वो बोले कि तुम मुझे एक सिंगल पीस दे दे, और यहाँ हालांकि दिन तो खत्म हो रहा है, एंड सी द केक, केक तो फ्रेश भी लोग लेना पसंद करते हैं, राइट, अगर वो ऐसा हो जाए तो कौन खाए, लेकिन फिर भी वो उसमें केक, छोटा सा केक बनाती है, तो लेती केक बनाती है, वो बड़ा हो जाता है नेचुरली, वो जब फूलता है तो बड़ा ही होगा, बराबर, बड़ा हो जाता है, और फिर वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है, इस वजह से ही नीडेड अनदर, फिर उसका दूसरा आटा ठीक है, वो बैटर प्रिपेयर करते हैं ना, तो फिर से बैटर प्रिपेयर करती है, लेकिन वो जो पहला प्रिपेयर करा था उससे कम, and still a smaller one, उससे भी छोटा, and it looked when she turned it out at a large and fast had done, और वो जो बनके रेडी होता है वो उससे भी बड़ा, एक बड़ा होता है, तो वो ये कहती है कि तो उससे भी बड़ा है, बहुत पैटर्न दिस इज लार्ज वन, तो वो क्या करती है, देन शी पुट अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, यानी जो कुशन सी बची हुई होती है ना, लोट आटे का जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग रहता है, चिपक जाता है तुम्हारी उसके अंदर, वो लेती है, उसका बैटर प्रिपेयर करते हैं, हीट करती है उसको, एक छोटा सा रोल करके उसको फ्लैट बनाती है, एक थिन वेफर केक बनता है, वेफर टाइप हो जाता है, एंड वो भी रेडी करती है, लेकिन वो भी बड़ा हो जाता है, वो उसका मन इतना नीचे ना कि कोई उसको दे दे, बराबर। तो वो फिर वो क्या बोलती है, फोर शी सेड माय kids that seems too small when I eat of them yourself and yet too large to give up, so she put them on the shelf। तो वो क्या कहते हैं कि जब मैं केक बना रही हूँ, ये देखने में बहुत छोटा है, मैं जब खाती हूँ तब बहुत छोटा है, लेकिन देने के लिए, किसी और को देने के लिए वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो क्या करती है, पापा तो स्क्रैप से बना हुआ नीट करा उसने जो केक बना वो उठाकर फिर से शेल्फ पे रखा। अब ये सारी हरकतें बेचारे सेंट पीटर वहां पे खड़े 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 देख रहे थे, एंड यू जस्ट इमेजिन कि 2 मिनट में मैगी की तरह रेडी नहीं होता, इनफैक्ट मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, वो जो ऐड देते हैं तो उसके अंदर भी मैं तो वो ना कोट पे जाना चाहिए, वो कहते हैं 2 मिनट में तो पानी भी नहीं उबलता, पैकेट से निकलने में 2 मिनट लग जाएंगे, बेटा ऐसा ही होता है। मैम पानी उबल में देर लग, तो फिर वो क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो वहां पे खड़े खड़े उनको गुस्सा आने लग जाता है, किसी इंसान ने 2-3 दिन से खाना ना खाया, उसे भूख लग रही है, और वो बोले कि आप कुछ भी पड़ा हो, कुछ
कोई छोटा सा एक पीस केक का मेरे को दे दे। I'm not talking about saying teacher only, I'm just talking about जो क्या अगर विद आप स्कूल जाते नहीं हो, आप अगर स्कूल से होकर आओ, लंच बॉक्स में लेकर ना आओ, अगर आप आओ और 12:30 to 1 o'clock आप घर आ जाते हो, राइट? आप आते सीधा बोलते हो मम्मी खाना दो, अरे मम्मी will scream on top of her voice, just go and just wash your hands, wash your face, get your change your clothes, uniform, बराबर, and put them in the laundry bag so that she can wash it out. ये बोलते, but you people are not ready, पहले कुछ लोग मेरे को खाना देने को बहुत भूख लगी, then she will tell, okay go and just wash your hands. और उसके बाद जब वो दाल का पर चढ़ाए, सब्जी काटने बैठे, रोटी काटा या रोटी बनाने लगे, आप तब भी वो भी सहन कर लो, बराबर है? लेकिन फिर ओहो ये दाल तो बहुत ज्यादा हो गई, मैं दूसरी बनाती हूँ, मैं देना थोड़ी लो, दोबारा ऊपर चढ़ाए, सब कुछ और प्रिपेयर करें, ओह ये भी बहुत ज्यादा, फिर चढ़कर इतनी सी दाल को उबाले वो करें, और फिर भी होते हैं। मेरी दाल जब मैं खाती हूँ तब वो छोटी कम होती है, अगर देने के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और उठा के रख, फिर आपका दिमाग की हालत क्या होगी, बराबर है? तो यहाँ पे बेचारे सेठ पीटर जिन्होंने पूरा दिन हो गया है, खाना खाया नहीं है, खाने को मांग रहे हैं और वो बार बार ये करे जा रही है, बराबर? तो उनको और गुस्सा आ जाता है, एंड क्योंकि वो उनको बहुत भूख लग रही थी और भूख के कारण वो बेहाल हो रहे थे, वो सेठ मतलब बेहोशी वाली हालत हो रही थी, एंड श्योरली सच अ वुमन, और वो जो लेडी है वो उनको प्रोवोक कर रही थी, गुस्सा बार ऐसा कोई करे तो, अब जैसे खाना डालने को बोले बार कोई थाली रखे, फिर चम्मच रखे, फिर कटोरी रखे, फिर कटोरी निकाल के दूसरी रखे, फिर वो रखे, कभी रोटी एक रोटी ऊपर दो रोटी नीचे, ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो आपका दिमाग हो जाता है, one just get annoyed of that particular thing, बराबर? वो annoy हो जाते हैं। तो इसी तरह से टीचर भी गुस्से में, ठीक है, वो गुस्से में आ जाते हैं और फिर surely such a woman was enough to provoke a saint, और ऐसी जो लेडी होती है उसका ऐसा जो बिहेवियर होता है वो प्रोवोक करके वे उकसाती है, गुस्सा करने के लिए जो उकसाना होता है वो एनकरेज उकसाती है, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, and he said you are far too selfish, underline this line, you are far too selfish, ये आपके रिमूव जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दिखे ना आप, बराबर है? तो अंडरलाइन दिस लाइन, और वो बोलते हैं कि and he said you are far too selfish, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, मतलबी हो, लालची हो, बराबर? ऐसे हो, ग्रीडी हो, to dwell a human form, ये दोनों अंडरलाइन कर लेना, and he said you are far too selfish to dwell a human form. अब इसको आप जब चेंज करोगे TOO को हटा के आप लोग को क्या करते हो, सो दैट लगाते हो, you are so selfish that you cannot dwell in a human form, ऐसा इसका मतलब ये होता है कि तुम इतनी मतलबी, इतनी लालची, इतनी ग्रीडी हो कि तुम्हें ये जो शरीर मिला है ह्यूमन बीइंग का उसके लायक नहीं, you do not deserve the body or the birth of a human form, बराबर? आप उसको डिजर्व नहीं करते to have both food and shelter and fire to keep you warm, तो क्या करते हैं, उनको श्राप क्या कहते हैं कि भाई अब दोनों के लिए, खाने के लिए और शेल्टर के लिए वो बाहर खड़े थे, ठंड बहुत थी, तो ऐसा भी नहीं कि भाई आओ बैठ जाओ मैं आपको दे दूं, तो थोड़ी बहुत वार्मनेस तो आती को है, तो वो कह रहे तो दोनों चीज के लिए, इंसान किसके लिए मेहनत करता है, खाने के लिए, छत के लिए, बराबर है? खाना छत और अपने आप को मतलब कि लग्जरी थोड़ा बहुत मिले तो खाना और छत ही नहीं होती, बराबर? तो इन दोनों चीज के लिए, खाने के लिए और छत के लिए, शेल्टर, रूफ, होम,
उसके लिए, और दूसरा ये फायर जो आग चल to keep you warm, आपको जो गर्म रखे। Now you shall build as a bird. अब तुझे बर्ड की जिंदगी जीनी पड़ेगी। You shall build as the bird, यानी कि अब से तू एक पक्षी का जीवन जिएगी। And shall get your scanty food, और तुझे अपने scanty means little, और अपने छोटे से बर्ड्स क्या करते हैं, वो इतना सारा नहीं खाते, वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दाना दाना खाते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उस स्कैंटी फूड के लिए तुम्हें, बराबर, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, आपको ड्रिल करना पड़ेगा। वुड पैकर होता है, बराबर, वुड पैकर लकड़ होता है, लकड़ को वो क्या करता है, पूरा दिन वो जो ट्री होता है करता है, उसके बीच में से छोटा सा नट या बीज सा निकलता है, बराबर। तो whole day round he is boring and boring and boring, drilling and drilling and drilling the wood, और इस वजह से उसे wood पैकर भी बोलते हैं, बराबर है। तो क्या बोलते हैं, by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood, पूरा दिन सूखे जंगलों में, wood means the forest. Every time you hear the words in English poem book, अब वो एक और poem थी ना, last year I think people have read The lake is slave in his free. Wide roadside. The duck and the kangaroo. Road not taken. The road not taken. Not take. The duck and the kangaroo. The road not taken. बराबर। तो ऐसी वो उसके अंदर भी गुड्स जब भी आए तो समझो लकड़ा नहीं, पोइट्री के अंदर ज्यादातर उसका मीनिंग फॉरेस्ट होता है, मींस जंगल। तो कि भाई ये ऑल द डे पूरा दिन आपको गर्मियों के अंदर ही सूखे, ये क्या नाम है, सूखे जंगलों के अंदर आपको पूरा दिन खोदना पड़ेगा पेड़ों को, बोर एंड बोर एंड बोर। देन आप, और ऐसा ही कहते ही सेंट पीटर के ऐसा कहने से वो एकदम से चिमनी से बाहर निकलती है, नेवर, और उसके बाद उसने कभी भी उसका शब्द किसी ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लोर, और उस चिमनी में से बाहर निकलते हुए वुड पैकर बन के निकलते, बराबर। एंड फॉर शी चेंज, क्योंकि वो एक बर्ड थे जो कन्वर्ट हो गई, फॉर शी इज चेंज इन अ बर्ड, and she had a scarlet cap on her head, और उसके सिर ऊपर एक scarlet कलर का कैप है, means red, dark red, magenta types, okay, and that was left the same, और बस उतना ही कुछ बचा, क्योंकि उसने वो जो एप्रिन वगैरह है कुछ पहना होगा, वो रेड कलर होगा ऐसा हो गया। और आप वुड पैकर को भी देखो तो उसके सिर पे रेड रेड होता है, तो थोड़ा सा वेलवेट टाइप होता है, and that was left the same, and all the rest of her clothes were burnt, और उसके सारे जो भी उसके क्लोथ्स थे वो जल गए। वाई जल गए, क्योंकि वो चिमनी में से बाहर निकली, और चिमनी में तो क्या थी, वो बेक करने लगे बिकॉज़ ऑफ फर्नेस, ओके। एंड but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame, ऐसे हो गए जैसे काले कोयले होते हैं ना, कोलसा होता है ना, कोल की तरह से जब फ्लेम निकलती है धुआं, ब्लैक कैसे हो। So color of a woodpecker is black, and on the top of her head she or he has a red color, scarlet color का cap होता है, and every country school boy has ever seen her in the wood, और हर country जो गांव के जो बच्चे होते हैं ना, country means the village portion, कि जो गांव के अंदर जो बच्चे वो स्कूल जा रहे होते हैं, उन सब ने उसको जंगलों के अंदर देखा, जहां वो रहती है झाड़ पर, peaceful where she lives in the tree till this very day, आज तक वो वहीं पर ही है, boring for food, और फूड के लिए वो बोर करने लगती है, ड्रिल करने लगती है, ओके। now let's do the FOS, figure of speech करें, ओके। अब मैं बोलती हूँ, आप मेरे को बताओ क्या होगा। Let's start from away in the northern
क्या होगा? रिपीटेशन 2 बार अवयव आया. Yes, it will be repetition. दोबारा वह. Repetition. And where the hours of the day are very few. तो क्या होगा? ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट टाइप है कि जहाँ दिन के Person. hours बहुत कम Hyperbole. है तो hyperbole, क्योंकि दिन के जो Hyperbole. hours है वो तो 24 के Yes, 24 ma'am. ही रहेंगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है. Okay, so it will be hyperbole. Now again see, and the nights are so long in winter. जितनी नाइट लंबी होती है उतनी होती है, उससे फालतू नहीं होती. Hyperbole again. It is also over statement. So hyperbole. They cannot sleep them through. क्या होगा? Alliteration. कैसे होगा? Alliteration आ रहा है. That they them through. So it is alliteration. But what other? उसके अलावा क्या होगा? No, them nothing आता है. Sentence में तो कौन सा होता है? जब negation जब कोई भी Litotes. negation no, never, nothing, not, आएगा. तो लिटोट्स आएगा. Lactose होती है. Okay, so it is lactose. Now see, where they harness a swift reindeer. क्या आएगा? Alliteration. They, बराबर है. फिर to the sledges when it's snows. ये दोनों लाइन के अंदर alliteration ही है, दोनों इकट्ठी लाइन है. Sledge, snow, where, when, बराबर. They and the children look like bears cub. तो ये क्या आएगा? Personification. Simile. Simile. Simile, because like आया है ना, तो there is a direct comparison. Okay, in their funny fairy clothes. Alliteration. Third stanza देखो बेटा. Tell them a curious story. मैम So it is transfer epithet. क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेल और peculiar word मतलब curious का adjective. I don't believe it's true. अब कौन सा आएगा? लिटोट्स. Yes, litotes. Very good. पहले वाले में क्या आएगा? Yes बेटा. मैम ये लाइन है ना, कौन सी लाइन बेटा? मैम दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, उसमें क्या आएगा? Transferred epithet. ओके मैम. Then you see, and yet you may say you may learn a lesson if I tell you tell the tale to you. First of all, it is alliteration. Yes, ma'am. I'll try. By, L, U, T, तो ये alliteration है. ठीक है. साथ के साथ आप देखिए इसके अंदर U जो है वो repeat हो रहा है. So when the whole word is repeated, it is repetition. When a letter or a consonant or a sound is repeated, it is alliteration. Right? Now, Ma'am? yes, Ma'am? beta. मैम ये वाले जो ना दे टेल देम अ कर्सिव स्टोरी, तो मैम उसमें एलिट्रेशन आएगा मैम. द टी है ना मैम. बेटा मैंने बोला अभी alliteration आएगा और उसके बाद repetition आएगा. यार देखिए बाय है, बाय उसके अंदर बाय आया, फिर एल आया लर्न लेसन में, उसके बाद Time के बाद- टेल के अंदर. बराबर. मैम हाँ बोलिए ना. मैम ये वाली उसके फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन ना, दे टेल देम अ कर्सिव स्टोरी, उसमें मैम क्या
एलिट्रेशन आएगा ना मैम, टी आपको टी। बोला बेटा एलिट्रेशन आएगा, बोला मैंने बोला एलिट्रेशन आएगा, ठीक है। अब देखो वही तुम्हें बोला कि इफ आई टेल द टेल टू यू तो इसके अंदर एलिट्रेशन आएगा, और अगर दोनों लाइन अपने इकट्ठी लेते हैं तो रिपीटेशन भी आएगा। ऊपर वाली लाइन में भी एलिट्रेशन है, नीचे वाली लाइन में भी एलिट्रेशन है, और यू रिपीट हो रहा है, तो एक ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में, दैट इज रिपीटेशन। ओके, नाउ आप दूसरा देखिए, once when the good said teacher, तो इसमें क्या आएगा? एपोस्ट्रोफी एक एपिस्ट्रोफी नहीं, मेटोनॉमी आएगा बेटा। मैम कैसे? टीचर को आप देखो, इसको अलग से वो दिया गया है ना, इसलिए। फिर देखो लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट, तो ये क्या आएगा कि ये आएगा तुम्हारा मेटोनॉमी, बराबर है। मैम सेकंड और थर्ड लाइन दोनों में मेटोनॉमी। थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में। फिर देखो कि he came to the door of a cottage, synonym Alliteration. क्या बेटा? Alliteration. तो voice is not clear बेटा। Alliteration. कैसे alliteration बेटा? टू और द का टी रिपीट हो रहा है। हाँ, तो he came to the door of a cottage, तो D कहाँ रिपीट हुआ दोबारा? मैम सी रिपीट हो रहा है। हाँ, alliteration C रिपीट हुआ तो alliteration है, anecdote है, सॉरी synecdoche है। फिर in the traveling round the earth and क्या बेटा? बोलिए बेटा। Where a little woman was making cakes and baking them on the earth, तो ये internal rhyme आएगा, alliteration भी आएगा। मैम पर्सनिफिकेशन इसमें नहीं आएगा। मैम लिटिल वुमेन दिया है तो पर्सनिफिकेशन नहीं आएगा। और है EARTH, फिर नीचे वाली लाइन देखो HEARTH, तो इंटरनल राइम हुआ बेटा। फिर alliteration हुआ woman was where, ठीक है। फिर देखो and being fed with fasting, alliteration FF आया। और देखो अगर दोनों लाइन ले and being fed with fasting for the day was almost up, तो metonymy। मैम alliteration. लास्ट की टू लाइंस हैं, he asked her from her store of cakes, तो alliteration सॉरी repetition to give him a single one, ये अगर दोनों लाइन लेते हैं तो देखो repetition तो है, alliteration भी है, अब आएगा tautology। अब देखो, so she made a very little cake, but as it baking late, alliteration है, क्योंकि देखो आपने देखा as तो alliteration जाएगा, बराबर है। फिर आता है anastrophe, ANASTROPHE, anastrophe। फिर देखो नीचे वाली लाइन, she looked at it and thought it seemed, तो उसके अंदर alliteration जाएगा,
मैम रिपीटेशन भी आएगा ना, ईट ईट 2 बार है। 2 बार है। हमें भी एलिट्रेशन आएगा। करेक्ट। अब देखो, therefore she needed another and still a smaller one. Alliteration. Yes, ma'am. बराबर है। अब देखो इस लाइन में क्या है कि अगर पूरा स्टेंजा देखा जाए, अगर आपको दे दो कि इसमें क्या क्या आएगा, कौन सी एफओएस आएगी, तो आप सिमिली भी दे सकते हो, एलिट्रेशन भी दे सकते हो, एंटीथेसिस भी दे सकते हो। स्मॉलर एंड लार्जर आर द टू अपोजिट वर्ड्स। ओके, दे आर नॉट इन वन लाइन, they are having the conjunctions in it, between it and वो सेमीकोलन ऑल दैट है। तो इसके अंदर क्या है कि एंटीथेसिस भी आएगा। Okay, अब देखो, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. Repetition, alliteration. फिर देखो, and baked it thin as a wafer. Simile, as a, but she couldn't part with that. ये दोनों लाइन इकट्ठी करोगे तो इसके अंदर सिमिली आएगा। मैम लिटोट्स भी मैम आएगा। लिटोट्स। हाँ आएगा। couldn't है ना, could not, तो लिटोस भी आएगा। देखो, for she said cake seems too small when I eat to them myself are yet too large to give away. Repetition, antithesis, alliteration, फिर देखो नीचे वाला पैराग्राफ, फर्स्ट टू लाइंस देखो। The good saint teacher grew angry, for he was hungry, internal rhyme, and faint. Internal rhyme, alliteration, फिर देखो, and surely such a woman was enough to provoke to provoke a saint. Alliteration, surely, such, saint, was, woman, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन देखो, फर्स्ट टू लाइंस, एंड he said you are far too selfish to dwell in a human form. Epigram, क्या मैम? epigram, epigram, EPIGRAM। मैम एलिट्रेशन भी आएगा ना, एच मैम। मैं आपका वीडियो चिपक गया। यस मैम। नो आज नहीं। Food and shelter, fire to keep. Alliteration, now you shall build as the birds do. Simile, and shall get your scanty food. साथ में करोगे तो alliteration आएगा, repetition। तो नीचे वाली लाइन देखो, by boring and boring and boring, repetition, all the day in the hard drives good। तो साथ में repetition के साथ में और क्या आएगा, alliteration, day dry। अब उस पेज का लास्ट स्टेंजा देखिए,
Then up she went to the chimney, never speaking a word. Lintos. Alliteration. देखो. And out of the drop flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Alliteration. Metonymy. Page number 67 पे आइए बेटा. She had a scarlet cat on her head. Stand up. Schedocche. Alliteration. Say, she, scarlet. ठीक है. फिर देखो. But all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Simile. Alliteration. B is repeated. देखो. And every country school boy has seen her in the wood. Hyperbole. ये कुछ ज्यादा psychology फेंका हो गया. बराबर. Overstatement. मैम एलिट्रेशन आएगा ना एच एच. हाँ बेटा आएगा. इसमें भी आएगा. See school आएगा. तेरा नंबर आएगा. ठीक है. And last two lines देखिए. Where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Repetition. Alliteration. अब बोलिए. किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई मीनिंग का पता ना चल रहा हो, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो. Please ask. But one by one, so that I can hear you nicely and perfectly. Come on, बोलिए बेटा. Nobody? Why? बोलो. No, ma'am, no doubt till here. Repeat उसको होएगा. निकलेंगे डाउन को. Okay then. Who will tell which country or countries do you think the Northland refers to? चलो ये ढूंढ के बताओ फिर. Or what did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? कौन बोलेगा? कि what did Saint Peter ask the lady? मैम न्यूजीलैंड. क्या बेटा? न्यूजीलैंड. ग्रीनलैंड. न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड एंड नॉर्थलैंड. ये बोल रहे हो ना? Yes, correct. And what did the Saint Peter ask the old lady for? कौन बताएगा? This is selfish. Answer is What was the lady's reaction? Bake cakes.
The lady, the lady tried to bake a small cake for the Saint Peter. हाँ बेटा, how did he punish her? Can I? Sure बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, Saint Peter made her a woodpecker, and she flew away. Change her into a bird. बराबर है. Yes, और ना ma'am. कि now you shall build as the bird. जैसे पक्षी अपना नेस्ट बनाते हैं, बराबर है, तो उनको पर शेल्टर नहीं होता, वो सिर्फ लाइक काउंटेक्ट, बराबर है. और Yes, ma'am. हमें खाने के लिए you have to search and here and there, so very little tiny and little things. Okay, then how does the woodpecker get the food? Ma'am, can I? The woodpecker get the food by boring holes into trees. Yes, the woodpecker find the food by pouring and pouring in a hard dry roots on the tree. बराबर है. To get a nut और एक छोटा सा कुछ होता है उसके लिए हमेशा डिग करते रहते हैं यार, वो उनको at the middle of that particular tree, तो जो डिग कर रहे हैं तो उसके middle में मिलता है, शुरुआत में भी नहीं मिलता. So take off it from the beak of that particular woodpecker का जो beak होता है, it is very sharp. तो कितना he has to bore or he has to drill or he has to dug that particular tree, और उसमें से एक छोटा सा Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? तो तुम्हें सही में लगता है? हाँ बोलो बेटा, आप बोलो. चलो. बोलिए बेटा. This old woman had known Saint Peter was asking her for a cake. She would have made him welcome and offer him something to drink as well as. कि अगर उसे पता होता कि भाई ये बहुत ज्ञानी, अनुभवी और सिद्ध, अपने हिंदी लैंग्वेज में सिद्ध पुरुष है, तो वो ऐसा करती? आई डोंट थिंक सो वो ऐसा करती, बल्कि उनको अंदर बिठाती तो ठीक से खाना बना खिलाती. अगर वो उसे पता होता तो. What is our belief? और वैसे भी अपने घर में कोई कहते हैं ना कि भाई अगर आपसे कोई इंसान आपके घर पे आकर आपसे कोई कुछ मांगता है, अगर आपके पास वो चीज काम पे है ना, तो प्लीज गिव देम. तो ये जस्ट गिव टू यू टू गिव हिम, कि आप उसको वो चीज लेट करो. वो मांग रहा है, देन मांगना इंसान का व्यक्ति होप से मांगता है, उसके पास कुछ नहीं है, and he is in very much need of it and he has trust and faith on you, so he has just came to your door, come to your at your doorstep, तो वो आपसे मांग रहा है, तो आप उसको दो. आप देखो ये तो अपने you can say the New Zealand European saint हो गए. आप अपने खुद की सेंट की बात को रखो तो भी आपको यही बोलेंगे. साईं बाबा में तो सब बिलीव करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सी द साईं बाबा एंड ऑल दैट, बराबर है. तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी यही बोलते हैं ना कि कोई अगर तुम्हारे दरवाजे पर आता है, कुछ मांगता है, तो उसको आप जरूर दो, चाहे थोड़ा दो मगर उसको दो, क्योंकि वो इंसान बड़ा मजबूर होके, बड़ा मुश्किल में होगा, बड़ी मजबूरी होगी, उसकी पता नहीं क्या कंडीशन रही होगी कि वो इंसान आपके दरवाजे पर आता है और आपसे मांगता है. ठीक है, आपको वो इंसान सामने जो मांगना है वो आपको पसंद नहीं है, तो फाइन फाइन है, मगर फिर भी वो आया है तो उसको खाली हाथ मत भेजो. Give something.
is helpful or needful to that particular person. ऐसा साईं बाबा भी बोलते हैं और जो आप कोई भी धर्म उठा के देख लो बेटा उसके अंदर यही बात होती है. See, this is Christianity. Okay. So people are very much कहते हैं कि लाइट लगता है जो क्रिश्चियन और उनके ट्रेडिशन कल्चर देखकर वो लोग अपने को अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो see that in that particular religion also what they are saying कि आप दो मांगने आए थे उसको दो थोड़ा दो मगर दो. और उन्होंने भी क्या मांगा सेंट पीटर ने कि भाई मुझे तू अपने केक की शॉप में से एक पीस एक छोटा सा केक दो. वो ये नहीं करे कि मुझे अच्छा इतना बड़ा 3 लेयर 3 वाला चॉकलेट व्हाइट फॉरेस्ट अलग अलग मिक्स फ्रूट वाला या वो मेरे को केक दो ब्लूबेरी वाला केक दो. ये कौन पार्टी नहीं to satisfy his hunger. For he was walking so long, okay, and almost the day was done. The दिन हो गया था घूमते घूमते और उसकी तो एक छोटा सा पीस जिससे कि भूख शांत हो. खाने को नहीं मांगा था बंदे ने. थोड़ा सा वो चीज मात्र वो भी नहीं हो पाती. मैम आप चिपक रही है. अब देखो अब देखो is the story a true? No, it is a legend. It's a folk tale. Or there is no proof that offense. There it is also that not. कुछ लिखा हुआ है कि मैं वो poet बोलते हैं मुझे नहीं अगर देखा जाए तो एक फैंटेसी है कि एक औरत एक लेडी वर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. इतनी बड़ी छोटा सा वर्ड इतना सा होगा चलो इतना लगा अगर इतना नहीं हो तो तब नहीं बात है. Which part of this मैम आप बहुत चिपक रहे हो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही. यस मैम story is चिपक रहे. we want to not be so greedy कि उनको इंसान का मिला है कि वो हो जाए. See, human being एक ऐसा स्पीशीज है कि जिसके अंदर मैम यहाँ पर आपकी स्क्रीन चिपक रही है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. यस मैम. आपकी वॉइस नहीं आ रही. ये बेटा मैम आपकी वॉइस बराबर नहीं आ रही है, स्क्रीन भी चिपक रही. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. चिपक रही है मैम. ओके बेटा मैम आप भी चिपक गए हो. सब ठीक हो जाएगा. तो ठीक है अब सही हो जाएगा. नो मैम अभी तो ये चीज है जिसके अंदर आप लेकिन अपने की मदद तो नहीं करते, दूसरे को परेशान जरूर करते. सो हेल्प आउट. ओके फाइन विद इट. अगर पूछना रह गया आप लोगों को तो पूछ सकते हो. नो मैम. बेटा नो मैम कुछ नहीं पूछना. मैम ये लिखने हैं ना मीन्स नोटबुक में क्वेश्चन आंसर. हाँ बेटा ये जो फिगर ऑफ स्पीच लिखवाई है वो पूरी वन टाइम लिखना इन नोटबुक. ओके. करो ना.
आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो मैम क्वेश्चन आंसर लिखना है। ये बेटा मैम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने ना। अभी नहीं पर ओके अब बोलो then leave बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। bye 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 बाय मैम। bye बाय मैम। चैप्टर 14। Chapter 14, okay. One minute, start. मैम चैप्टर 14 मिनिमल में पहुंचे थे। Okay. अब हम सॉइल पे आए हैं, आई थिंक सो। नो मैम, No, मिनरल ma'am. का थोड़ा बहुत आपने बताया था, उसके बाद हाँ, मिनरल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, मैम लेकिन ये बाकी है। राइट राइट राइट, ओके। Okay, fine. Okay. Now, what you understand from minerals? What exactly minerals are? Then minerals are found from the oceans and seas. Okay, ocean and sea only. yes Then ma'am. many more Some other places. places? Then minerals are metallic minerals, gold metallic minerals, light metallic general use is metal and alloys. There are four types of minerals. मैम मिनरल इज दैट मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस। Okay. So this मैम all दे आर are नेचर। they are natural. Okay. Let me enter all the students. Okay. मैम सॉइल से बाकी है। कल से बाकी है ना? नहीं, मिनरल भी बाकी है, आई थिंक सो। यस मैम, बाकी था, थोड़ा बहुत ही आपने मिनरल से समझाया बाकी। था। मिनरल से बाकी। मैम मिनरल से बाकी है। ओके ओके, उन्हें तो मैंने सुना आपने। हम्म इंग्लिश करो, इंग्लिश पढ़ दो खोल। ओके, नाउ okay, classification of minerals, and let's discuss about minerals. Okay. Okay. Now, mineral is the matter which is formed due to natural organic and inorganic process and has a specific chemical composition. इसका मतलब क्या होता है? जो भी minerals होते हैं वो किस तरह से बनते हैं? जैसे कि बहुत सारे bed of the earth में ये leaves है, then organisms है, microorganisms है, फिर dead bodies है, animals की, birds की, humans की, राइट। वो डेथ यानी हमारे जो भी अर्थ है उसके अंदर बरीड होती जाती है, मतलब अंदर चलती जाती जाती है, राइट। तो वो जब अंदर जाती है ना, तो उसके अंदर केमिकल फॉर्मेशन होता है, राइट। तो उस केमिकल फॉर्मेशन के बाद वो सब जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें हैं जो बेड ऑफ द अर्थ में है,
that converted heat के कारण, pressure के कारण, water के कारण, air के कारण और chemical composition के कारण वो बहुत ही अलग अलग तरह के मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कोई कोल में कन्वर्ट हो जाती है, कोई मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है, कोई आयरन में कन्वर्ट होती है, कॉपर में कन्वर्ट होती है। तो उसके अंदर जो जो केमिकल कॉम्पोजिशन मिलते हैं उनको, राइट, तो उससे वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज अ मिनरल्स, उसे मिनरल्स कहा जाता है, राइट। अब मिनरल्स हमें तीन फॉर्म में इन द बेड ऑफ द अर्थ मिलते हैं। वन इज सॉलिड, second is liquid, and third in gaseous form that you know, right? Solid means iron ले लिया मैंने, right? कोल ले लिया, लिक्विड में मैंने मिनरल ऑयल ले लिया, राइट, तो उसको मैं लिक्विड में डाल दूंगी। गैशियस में मैं कंप्रेस नेचुरल गैस होता है सीएनजी, वो मैंने ले लिया नेचुरल गैस, राइट। तो ये सारे फॉर्म गैशियस फॉर्म में हो गए। तो मिनरल्स हमारी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड तीन फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म, राइट। अब हम जब मिनरल्स की बात करें तो वो हर एक मिनरल्स मैंने बोला ना, उसका जहाँ का जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जिस तरह के मिनरल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन वो जमीन में उस अर्थ में, वो पार्ट ऑफ द अर्थ में मिलते हैं, वैसे मिनरल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसे होंगे तो कोल बनेगा तो वहां पे कोल ही बनेगा, वहां पे अगर मिनरल ऑयल बनेगा तो मिनरल ऑयल बनेगा, या फिर कोल के नीचे भी आपको मिनरल ऑयल मिल सकता है, राइट। तो केमिकल कॉम्पोजिशंस के हिसाब से, पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी मिनरल्स बनते हैं, राइट। Minerals such as iron, copper, nickel, gold, silver are found in igneous rocks. ये सारे कहाँ पे मिलते हैं? जैसे कि हमने बात की कि आयरन की, कॉपर की, निकल, गोल्ड, सिल्वर, तो जहाँ पे इग्नियस, जहाँ पे पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, वहाँ के इस केमिकल कॉम्पोजिशंस ऐसे थे कि वहाँ पे ये सारे रॉक्स बनते। एक मिनट आप, मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। Coal, mineral oil and natural gas, etc. are available from stratified rocks. Stratified हमने बोला ना कि जो आपको पता है मुंबई है पानी के नीचे, मैंने नहीं बोला था कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स पानी के नीचे मिलते हैं, और उसमें ये मिनरल ऑयल बॉम्बे हाई बहुत फेमस है, जहाँ से हम मिनरल ऑयल निकालते हैं, मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ व्हाट वी से मिनरल ऑयल हम हर रोज निकालते हैं। तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में मिलता है, जहाँ पे लेयर्स के ऊपर लेयर्स में जहाँ पे रॉक्स बनते हैं पानी के नीचे, तो दैट इज नोन एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अच्छा, सारे ब्रांच के बच्चे हैं यहाँ पे? यस मैम। ओके, सारे ब्रांचेस हैं, घाटलोड़िया सारी ब्रांचेस है यहाँ पे? यस। ओके, तो मुझे बताओ, ये तो मैंने नारायणपुरा ब्रांच में शुरू किया था, आप लोगों को कहाँ तक हुआ है? मैं पागलों की तरह पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो ऐसे मिक्स ना हो जाए कि पहले जहाँ वहाँ के टीचर्स ने कहाँ तक पढ़ाया है। कि मैंने तो शुरू कर दिया, जस्ट क्लिक इनटू माय माइंड। वहाँ हर जगह पे 14 चैप्टर शुरू हुआ था। यस। हाँ, तो वो कहाँ तक खत्म हुआ है? शुरू किया ना सारे टीचर्स ने, तो कहाँ तक शुरू खत्म हुआ है बच्चा? बताओ। अच्छा, घटलोड़िया ब्रांच में कहाँ तक खत्म हुआ है? चलो बोलो। क्यों कोई बोल नहीं रहा है? आप लोगों को नहीं पता है कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? घटलोड़िया ब्रांच, you don't know till where the chapter 14 has been completed? क्योंकि मैंने तो नहीं शुरू किया चैप्टर 14 घटलोड़िया में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। शुरू हुआ है चैप्टर 14 घटलोड़िया में? आई एम आस्किंग समथिंग। घटलोड़िया ब्रांच के बच्चे मुझे रेज करे हैंड। हु इज ऑफ घटलोड़िया ब्रांच? ये सारे नारायणपुरा वाले ही है। धवल,
आप कौन सी ब्रांच के हो? धवल, आर यू देयर? कृष्णा श्री, यस मैम। आप कौन सी ब्रांच के हो बच्चा? मैम नारायणपुरा ब्रांच। मोक्षित, आप कौन से ब्रांच के हो? मैम नारायणपुरा ब्रांच। यानी सारे नारायणपुरा ब्रांच के ही हैं? यस मैम। अच्छा, दैट व्हाट आई एम आस्किंग कि सारे नारायणपुरा ब्रांच के ही है ना? यस मैम। ओके फाइन, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। तो मुझे कंफ्यूज हो गई कि अगर दूसरी ब्रांच के हैं तो फिर उनको कहाँ तक पढ़ा है, मुझे कैसे पता होगा। ओके फाइन। हाँ, देन कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में मिलता है, which while slate, marble, diamond etc are available from metamorphic rocks। जो मिक्सचर होता है ना igneous और stratified, हमने पहले पढ़ लिया है। तो उस रॉक में से डायमंड भी मिलता है, मार्बल भी मिलता है, देन स्लेट, वाइट स्लेट यानी लाइमस्टोन जैसा पत्थर भी उसमें से मिलता है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। नाउ अगर हम मिनरल्स के, यस वेद, एनी क्वेश्चन? यू आर रेजिंग हैंड फॉर अ व्हाइल। मैम मुझे पेपर में डाउट है मैम, मैंने पेपर अटेंड किया था और मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था, फिर भी में नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है पेपर। नॉट अटेम्प्टेड तो आपका शायद पेपर खुला नहीं होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरे में मैम सेम प्रॉब्लम मेरे पे भी आ रहा है। मैम मेरे में भी नो आ रहा है। नाम बोलो, किस किस का आ रहा है? मैम मैम नहीं फिर वेद, देन देवांशी मैम। देवांशी। मैम तुम मोक्षित लोगों के शायद पेपर खुले होंगे नहीं। मोक्षित ओके। और बट मैम पीडीएफ तो ओपन थी ना। यस मैम, मैंने भी पीडीएफ में मोकला था, मैम भेजा था। नारायणपुरा में रिजल्ट आ गया। नारायणपुरा का रिजल्ट मैंने कब से भेज दिया है बेटा? मैम मैम हमें अभी आया है, भेजा, अभी भेजा मैम मैम। अभी आया। 10 मिनट्स अभी पहले। आया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कब से भेज दिया। इट्स ओके, मिल गया ना रिजल्ट? ओके, जिसका नहीं मिला है ना, मुझे नाम दो और फिर से तुम लोग पीडीएफ में साक्षी मैम को भेजो। साक्षी मैम मुझे भेजेंगे, मैं आज का आज तुमको रिजल्ट भेजती हूँ, ठीक है? मैं तुम लोगों को मार्क्स भेज देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तुमको मैं मार्क्स बता दूंगी उनको स्पेशली, ठीक है? फिर से पीडीएफ भेज दो आपका, क्योंकि अगर नहीं चेक हुआ है तो मीन्स आपका कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो ही नहीं तो इतने सारे ब्रांचेस के पेपर चेक हो गए, ठीक है? या नहीं खुला होगा या कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। ओके मैम, तो साक्षी मैम को भेज देना। वापस भेज दो, मैं साक्षी मैम को कॉल कर दूंगी, वो मुझे वापस भेज देंगे, ठीक है? ओके। जिन जिन का नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है और सच में उन्होंने भेजा है तो मैं रीचेक कर लूंगी, फिर मैं भेज देती हूँ, ठीक है? ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इन आवर रूटीन लाइफ। हम अगर हमारी रोज की बात करें तो अराउंड 200 मिनरल्स आर यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम रोज 200 से ज्यादा मिनरल्स हम रोज यूज करते हैं। पानी में है, फिर घर में है, जमीन पे है, फिर हम जो चीजें यूज करते हैं, पेट्रोल, हर चीज में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको मिला के हम 200 मिनरल्स यूज करते हैं। मैं minerals are available, sorry कहाँ थे, हाँ 200 indirectly। A universally accepted classification of minerals is not possible। हम जितने मिनरल्स है उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, भाई इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो हम रोज यूज करते हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो however a general classification can be done as follows। हम जनरल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसकी बात करें तो प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। देन सेकेंड इज लाइट मेटेलिक मिनरल्स। प्रीशियस का मतलब होता है जो बहुत महंगे होते हैं, राइट? और महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत कम जगहों पे मिलते हैं, इसीलिए ये चीजें महंगी होती है। जो कम मिलती है वो महंगी होती है, सिंपल, राइट? तो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये बहुत ही मेटेलिक मिनरल्स है, मेटल के फॉर्म में है, तो ये महंगे हैं।
देन लाइट मेटेलिक, लाइट का मतलब ऐसा होता है कि सस्ते नहीं, मतलब बहुत ही पतले होते हैं, वजन में वो बहुत कम होते हैं, दैट इज नोन एज अ लाइट मेटेलिक। है मेटल के ही, लेकिन मेटल बहुत ही पतला होता है, मतलब बहुत ही लाइट होता है। मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम, ये सारे लाइट मेटेलिक मिनरल्स है। फिर मिनरल्स आर जनरल यूज, हम रोज यूज करते हैं, रोज, जैसे कि आयरन यूज किया बेंचेस पे बैठे, चेयर पे बैठे, फिर कॉपर यूज किया मोबाइल, वायर, सब जगह पे, लेड, जिंक, टीन, पत्थरों में, फिर हम जो पत्थर होते हैं जब हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, या फिर हम जो बर्तन यूज करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। देन मिनरल्स यूज्ड एज अलॉयज, अलॉयज का मतलब तो आपको पता होगा, अलॉयज मतलब आप किसी चीज में किसी दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उससे अलॉयज मतलब किसी भी मिनरल के साथ वो मिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज अ अलॉयज। क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, वेनेडियम, ये सारे अलॉयज है जो आयरन में यूज किए जाते हैं, कॉपर में यूज किए जाते हैं, उस सब में यूज किए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मतलब मिनरल्स है लेकिन वो मेटल फॉर्म में नहीं है, राइट? जैसे कि कोल है, चॉक है, माइका है, फ्लॉस्फर है, जिप्सम है, डायमंड है, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं लेकिन मेटल फॉर्म में नहीं है। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो जैसे कि कोल है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, मिनरल ऑयल गाड़ियों को चलाता है, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो उस तरह से इसे डिवाइड किया है। अब हम बात करेंगे कौन से स्टेट्स में मिलता है, राइट? ये कौन से स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये सारे मिनरल्स हमें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आयरन बोलूं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि राजस्थान में भी है, पूरे इंडिया में हर जगह पे मिलता है, नहीं। आयरन बहुत ही कम जगहों पे, मतलब पर्टिकुलर जगहें हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पे आयरन मिलता है, मिनरल ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ऐसे प्रॉपर एक थोड़े से ही रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं जहाँ पे ये मिलता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है कि आयरन हमें, चलो कौन बताएगा आयरन कहाँ कहाँ मिलता है? चलो बोलो। झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी, मध्य राजस्थान, प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, बिहार, ओके, मध्य प्रदेश, मैम मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक मैम है। तो बिहार, हम आयरन अब मैंगनीज कहाँ पे मिलता है? मैंगनीज बहुत कम जगहों पे मिलता है, कहाँ कहाँ कर्नाटक, मिलता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। कॉपर, गुजरात, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, वेस्ट सिक्किम, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मेघालय, देन बॉक्साइट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। गुजरात, लेड, लेड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य वेस्ट प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात। बंगाल, माइका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। लाइमस्टोन, मध्य 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 प्रदेश, प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र आंध्र प्रदेश, प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल गुजरात, प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ओके। तो ऑल क्लियर, कहाँ कहाँ पे क्या मिलता है? ये सारे Yes. यस मिनरल्स मैम। जो मेन मिनरल्स है जो हमारे कंट्री में इन अ लार्ज अमाउंट मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये सारे मिनरल्स है जो कॉमनली अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे ये सारे मिनरल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने मिनरल्स की बात की। ये मिनरल्स में इतना ही दिया गया है क्योंकि आपको 10th में मिनरल्स के दो चैप्टर्स, यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब ये मिनरल्स होते क्या है, यही हमें इस
इस चैप्टर में किया है। अब हम आएंगे सॉइल पे। सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो सॉइल की जब हम बात करें तो उसके पूरे फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करने से लेके एग्रीकल्चर प्रोसेस में, राइट, तो किस तरह से वो यूज करती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 10th में भी है यही सेम चैप्टर, यानी ये सेम टॉपिक का पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में 10th में है, लेकिन अभी हम 9th में इसका थोड़ा सा अंडरस्टूड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, अब सॉइल की हम जब बात करें तो सॉइल किस में यूज होती है, क्यों यूज करते हैं हम सॉइल, चलो बताओ। सॉइल का मेन पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, ताकि वेजिटेबल्स और वो सब फार्मिंग। ग्रो होए। यानी सॉइल सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, राइट। तो सॉइल का पहला यूज है फॉर एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। व्हाई? टू ग्रो प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, इन सबको ग्रो करने के लिए क्या हमें चाहिए? सॉइल चाहिए। सॉइल के बिना इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ग्रो एनीथिंग। इट इज पॉसिबल, सॉइल के बिना कुछ पॉसिबल है कि हम कुछ ग्रो कर सके? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो वी नो दैट द सॉइल इज बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Besides agriculture, soil is also very important, right? Soil is a thin layer formed of the organic and inorganic matter of the surface of the earth. यानी ये जैसे कि हमारा ये surface of the earth है, right? अब soil ऐसा नहीं है कि ये पूरा earth soil से भरा हुआ है, नहीं। soil किसे कहते हैं? जो thin layer, यानी जैसे कि ये हमारा earth है और उसके ऊपर ये जो thin layer, मतलब एक पतली लेयर होती है मिट्टी की, दैट इज नोन एज अ सॉइल। ये सॉइल है, यही हमारा प्लांट्स ग्रो करती है। ये जो थिन लेयर है यही प्लांट्स ग्रो करती है, इसी में कैपेसिटी है प्लांट ग्रो करने, राइट। उसके सिवाय किसी में प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं है। अब इसमें ये सॉइल बनती कैसे है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जैसे पत्ते गिरे, जानवर मरे, ह्यूमन बींग्स मरे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स मरे और वो क्या हो गए? इसके अंदर मिक्स हो गए, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक मतलब कि केमिकल्स है, रॉक्स है, ये सब इसके अंदर मिक्स होता है, पानी है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब मिक्स होता है और उससे ये पूरी मिट्टी बन जाती है। मीन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन, organic and inorganic formation. Right? Soil is related to the surface of the earth in the same way as the apple and its skin. मतलब आप समझ सको कि एप्पल से कैसे उसकी स्किन चिपकी हुई होती है, उसी तरह से अर्थ से सॉइल चिपकी हुई होती है। इस तरह का उसका एक पूरा रिलेशन है, और यू कैन से इट इज मेड इन सच अ वे। Soil is related to the surface. The thin layer of the crust of the earth is called soil. यानी ये definition है soil की, the thin layer of the earth crust. The thin layer यानी जो crust के ऊपर जो एक layer है, पतली सी layer है, that is known as the soil. उसे soil कहा जाता है, right? अब soil कैसे form होती है? अगर आप देखोगे ना कि आप जैसे कि महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी, ब्लैक कलर की सॉइल मिलेगी। अब आप राजस्थान जाओगे ना तो आपको ब्राउन कलर की सॉइल मिलेगी। अब गुजरात जाओगे ना, गुजरात में कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलेगी, कहीं पे येलो सॉइल मिलेगी। आप कर्नाटका जाओगे तो आपको रेड कलर की सॉइल मिलेगी, असम जाओगे तो रेड कलर की सॉइल मिलेगी। तो सॉइल के कलर्स कैसे होते हैं, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल तो है लेकिन सॉइल बनती कैसे है, कैसे बनी? तो सॉइल बनती कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक सो मैंने ये डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेम्बर। नो मैम, नहीं किया था शायद। नहीं किया ना, ओके फाइन। हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? और ये सॉइल फॉर्मेशन 10 महीने में या 1 साल में या 5 साल में नहीं होती है,
50 साल में भी नहीं होती, 100 साल में भी सॉइल फॉर्म नहीं होती है, 1000 साल में भी नहीं होती, लाखों साल में होती है। जब लाखों साल का ये जो प्रोसेस है उससे कन्वर्ट होती है सॉइल। अब सॉइल किस में से बनी है? सॉइल बनती है रॉक्स में। इसीलिए जहाँ पे जिस तरह के पहाड़, जिस कलर के पहाड़ होते हैं ना, उसी कलर की मिट्टी होती है। अब देखना, जब अगर राजस्थान में काली मिट्टी दिखेगी तो काली काले पहाड़ होंगे, राइट? तो ये रॉक्स में से कन्वर्ट होती है। अब रॉक्स तो बहुत बड़े पत्थर है, आप बोलोगे मैम ये तो इतने बड़े पत्थर है, ये कैसे मिट्टी में से मिट्टी में? हम थोड़ी तोड़ने गए हैं कि मिट्टी बनाओ, तो हम नहीं बनाते, नेचर बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे कि ये रॉक है, जैसे कि दिन हुआ, सन आता है, तो सन आता है ना, तो ये रॉक क्या होता है? एक्सपांड होता है। क्या होता है? एक्सपांड मतलब खींचता है। और जब नाइट होती है ना, जब रात होती है, तो ये क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है ये। तो अब बार बार ये एक्सपैंड होगा धूप में, ठंडक में ये श्रिंक होगा, तो इसमें क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं। फिर उसमें पानी बर्फ घुसने के कारण वो फिर टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने नहीं देखे टुकड़े, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े पड़े होते हैं अपने पत्थरों में, यानी दरारें देखी होंगी, क्रैक्स देखे होंगे बड़े बड़े, राइट? आप जब भी हाईवे पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आप देखोगे, तो ये क्रैक्स ये पूरा प्रोसेस करता है। फिर ये है ना, पानी के कारण, धूप के कारण, एयर के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये छोटे टुकड़ों में से फिर धीरे धीरे पानी के साथ, हवा के साथ बहते जाते हैं, और वो धीरे धीरे घिसते जाते हैं, और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। एंड दिस इज अ मिलियन ऑफ years प्रोसेस, million of years, 100 of years are required to convert a rock to the soil. मतलब हजारों लाखों साल हो जाते हैं जब एक रॉक सॉइल में कन्वर्ट होता है, और उसी तरह से आपको वो सॉइल में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा। क्लियर? अब सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ अ डेनिडेशन। इस प्रोसेस को, ये जो मैंने बताया ना, एक्सपांशन और श्रिंक होता है, इसे हम अगर प्रॉपर वर्ड्स में हम यूज करें तो इसे डेनिडेशन कहा जाता है। अगर मैं ऐसे डेनिडेशन बोल दूं ना कि डेनिडेशन ऑफ रॉक्स, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि डेनिडेशन क्या होता है। दिस इज नोन एज द डेनिडेशन ऑफ रॉक्स। The rock surface is eroded due to the factors like temperature, rain, snow, air, vegetation, and insects, and turns into a powdery form. जो मैंने बताया ना कि धीरे धीरे वो हवा, सारे प्रेशर के कारण, स्नो के कारण वो धीरे धीरे वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। That thus it is formed the land layer. फिर वो क्या कर देता है? एक लैंड की लेयर कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस लेयर देयर आर ग्रेवल्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर भी देखने को मिलेंगे, राइट? स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। विच आर नोन एज अ रेगोलिथ। इसे क्या कहा जाता है? रेगो, इट्स अ साइंटिफिक वर्ड, राइट? इट इज नोन एज अ रेगोलिथ। रेगो मीन्स सॉइल। It contains only mineral contents. Then in a biotic matter, air and water are mixed with it. यानी ये जो रेगोलिथ होते हैं, जो पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, वो क्या होते हैं? मिनरल कंटेंट होते हैं सिर्फ। फिर उसमें बर्ड्स मर गए, एनिमल्स मर गए, पत्ते गिरे पेड़ों के, राइट? वो सब मिक्स हुए, वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे के वैसे थोड़ी रहते हैं, वो सॉइल के साथ वो भी इरोड होते हैं, तो वो उसके साथ फिर हवा आई, हवा उसके साथ मिक्स हो गई, पानी आया, पानी उसके साथ मिक्स हो गया, और फिर उससे पूरी क्या बन जाती है? मिट्टी। फिर उससे सॉइल बन जाती है, उसे सॉइल कहा जाता है। जो पत्थर है, कंकर है, उसे रेगोलिथ कहा जाता है। पर उसमें ये सारी जो ऑर्गेनिक मेथड, ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक थिंग्स, वो भी मिक्स हो जाती है, तो इट कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल। इट इज नोन एज अ सॉइल। Then finally soil is formed out of the mixture. Mixture का spelling wrong है, टोर लिखा है, U आएगा, MIXTURE. The process of soil formation is a long term process. ये soil का जो formation है वो क्या है? एक long term process है, right? Now soils in India.
हमारे कंट्री में सॉइल्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग सॉइल्स मिलती है, तो उसकी कलर, उसकी एज, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट, उसमें जो क्या मिनरल्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे कंट्री में इंडिया में सॉइल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, कलर, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, राइट। So that is we are going to discuss about the soil in India, मतलब कौन से तरह की soil हमारे कंट्री में मिलती है। चलो यहाँ से पहले हमने मिनरल से रीडिंग कर ले, फिर हम सॉइल पे चलते हैं, ठीक है। Yes, meat, lead. Yes, sir. Mineral. Mineral is that matter which is formed due to natural, organic, or inorganic process and has a specific chemical composition. Minerals are available from the interior of the earth in solid, liquid, and gaseous form. Minerals depend on the geological structure of the surface of the earth. Minerals such as iron, copper, nickel, gold, silver, etc. are found in rock, igneous rock. Coal, mineral oil, and natural gas, etc. are available from stratified rocks, while slate, marble, diamond, etc. are available from metamorphic rocks. Okay. Now, Krishna, read. Yes, ma'am. Classification of minerals. In our routine life, about 200 minerals are used directly or indirectly. A universal accepted classification of minerals is not possible. However, a general classification can be done as follows. Ma'am, ये read कर दूं? हाँ, कर दो। Okay, ma'am. First, metallic minerals. A. Precious metallic minerals are gold, silver, platinum, etc. Light metallic minerals are magnesium, bauxite, titanium, etc. Minerals of general use are iron, copper, lead, zinc, tin, nickel, etc. Minerals used alloys are chromium, manganese, tungsten, vanadium, etc. Second, non-metallic minerals. Limestone, chalk, asbestos, mica, phosphorus, gypsum, sulfur, diamond, etc. Third, energy resources, coal, mineral, and natural gas, uranium, thorium, etc. Okay. So this is clear. Now next, Prisha, read. Yes, ma'am. Major minerals and their spatial distribution. Mineral is first is iron. The states are Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh. Second is manganese. Then the states are Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa. Third is copper, and the states are Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Sikkim, Meghalaya, Maharashtra, West Bengalam, Madhya Pradesh, Jharkhand. Fourth is bauxite, and the states are Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand, Gujarat. Fifth, lead, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Maharashtra, Meghalaya, Sikkim, and Gujarat. Sixth one is mica. The states are Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand. Limestone. The states are Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Karnataka, and Himachal Pradesh. मैम आगे करूं? एक मिनट, किसने पढ़ा अभी?
Ma'am, Okay. Devanshi, read. Yes, ma'am. Soil. We know that soil is the basic resources for agriculture. Beside agriculture, soil is also very important. Soil is a thin layer form of organic and inorganic matter on the surface of the earth. Soil is related to the surface of the earth in the same way as the apple with its skin. The thin layer on the crust of the earth is called soil. मैं आगे पढ़ूं? Dwanit, read. Yes, ma'am. Soil formation. Soil is the result of denudation of rocks. The rock surface is eroded due to factors like temperature, rain, snow, air, vegetation, and insects, and it turns into powdery form. Thus, it forms the land layer. In this layer, there are gravels, smaller stones, pebbles, soil particles, etc., which are which are known as rejoice. It contains only mineral contents. Then the biotic matter, air, and water are mixed with it. Finally, soil is formed out of this mixture. The process of soil formation is a long-term process. Okay. Now, class, can you see in the your textbook map? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So now yellow color map. In yellow color, it is an alluvial soil. वहां पे इंडेक्स में लिखा हुआ है विद द कलर्स कि कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलती है. अलूवियल सॉइल एक ऐसी सॉइल है विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल अगर कोई सॉइल है हमारे इंडिया में, तो वो है अलूवियल सॉइल. वहां पे सबसे अच्छा एग्रीकल्चर हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब बेस्ट agricultural production can be done from the alluvial soil. अब alluvial soil है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक कहा जाता है खादर और एक कहा जाता है बांगर. अब इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब खादर क्या है, आप पूछोगे कि बांगर क्या है मैम, क्या डिफरेंस है. तो खादर का मतलब होता है कि जैसे कि रिवर बेड है, नदी देखी होगी आपने, नदी के पास जो ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट होके, ग्लेशियर्स में से मेल्ट होके, जैसे कि एक मिनट में व्हाइट बोर्ड करती हूँ. अब जैसे कि ये है माउंटेन. अब माउंटेन में से पानी नीचे आ रहा है, राइट. और ये जैसे कि ये है लैंड, और ये लैंड पे ये वाली रिवर है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये पानी ये नीचे आया और इसे कहा जाता है, यहाँ पे आया, एंड दिस इज अ रिवर. ये हमारा रिवर पार्ट है, ठीक है. अगर ये रिवर पार्ट है, तो यहाँ पे जो रिवर का जो बैंक होता है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिवर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रिवर है. तो रिवर के बैंक, बैंक क्या कहा जाता है, जो ये पूरा उसके नदी का तट होता है, दैट इज नोन एज अ रिवर, बैंक ऑफ द रिवर. तो ये पूरा जो, अगर पहाड़ों में से पानी आ रहा है, राइट, तो उसके साथ सॉइल भी लेके आएगा, वो सिल्ट, उसे सॉइल को क्या कहा जाता है, अलुवियल सॉइल को सिल्ट कहा जाता है. तो ये सिल्ट सीधा ये बैंक ऑफ द रिवर, मतलब पानी तो अंदर चला जाएगा नदियों के अंदर, लेकिन वो जो मिट्टी है वो यहाँ पे रह जाएगी. ये जहां जहां से पानी बहा होगा ना, मिट्टी वहां पे रह जाएगी और पानी आगे चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवर. तो ये जो रिवर्स के पास वाला जो एरिया है, ये वाला, ये न्यू अलुवियल सॉइल, जब जब पानी नीचे आता है उसके साथ मिट्टी लेके आता है, और उसे कहा जाता है खादर. ये खादर है, इसे खादर कहा जाता है, यानी ये सॉइल का नाम है. इन शॉर्ट, जो मिट्टी सॉइल होती है उसे खादर कहा जाता है. और उसके बाद एक होता है बांगर सॉइल. अब बांगर सॉइल क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब जब पुरानी मिट्टी हो जाती है ना, जैसे कि ये नदी तो नीचे आ गई
और नदी के साथ साथ पानी भी आया, लेकिन पानी इधर ही रहा, पानी की मिट्टी ये यहाँ पे ही रह गई और धीरे धीरे ये मिट्टी पुरानी हो जाती है। मतलब अपर लेयर में जो मिट्टी मिलती है, फ्लड प्लेन्स में नहीं, थोड़े से ऊपर टेरेस पार्ट में, तो उसे बांगर कहते हैं। ये बांगर है। और ये जो नदी के पास में मिट्टी मिलती है ना आपको, जो रोज मिट्टी पानी आता है और पानी के साथ जो मिट्टी आती है, उसे खादर कहते हैं। मतलब न्यू अलुवियल सॉइल कहते हैं, इसे न्यू कहते हैं। और जो बांगर है थोड़ी सी ऊपर मिलती है फ्लड प्लेन्स के पास, इसे ओल्ड कहते हैं। ये ओल्ड अलुवियल सॉइल कहा जाता है, राइट। जनरली सच इज अ सैंडी सॉइल एंड कंटेनिंग ओल्ड alluvium in the upper valley region of a river is called बांगर सॉइल, राइट। अब ये अलुवियल सॉइल होती कैसी है, मतलब उसका फीचर क्या है अलुवियल सॉइल का? तो बहुत ही स्टिकी होती है, डार्क इन कलर, मतलब डार्क ब्राउन कलर होता है, राइट। और डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। डार्क ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, राइट। और alluvial soil is seen in many part of India, most probably northern India। आप देखो आपको कहाँ कौन से स्टेट्स में आपको alluvial soil दिख रही है आपके फिगर में, 14.2 गुजरात फिगर में में। है फिर। गुजरात में है, फिर थोड़े से पार्ट मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, राइट। उड़ीसा, थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो दिस इज व्हाट अलुवियल सॉइल इज ऑल अबाउट। क्लियर? अलुवियल सॉइल क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हुआ। ओके, तन्वी, Yes, ma'am. तन्वी क्वेश्चन है कुछ बचा? नो मैम, रीडिंग के लिए रेज किया। हाँ, तो तन्वी रीड करो, चलो अलुवियल सॉइल। यस मैम। मैम सॉइल फॉर्मेशन से हो गया बच्चा, सॉइल फॉर्मेशन हो गया क्या बाकी है? मैम हो गया था। मैम हो मैम गया। हाँ, अलुवियल सॉइल रीड करो। यस मैम। फर्स्ट, alluvial soil. Alluvial soil can be divided into two types, Khadar and Bangar. The soil formed due to the fresh alluvial deposit is known as Khadar soil. As this soil is formed due to the river floods, it is found mostly nearby the rivers. Generally, such soil is sandy soil containing old alluvium in the upper valley region of a river is called Bangar soil. It is sticky and has dark color. Alluvial soil is seen in many parts of the country. Their fertility is also different at different places. Generally, such soil is very fertile. It is found in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, etc. ओके, नाउ कम्स टू ब्लैक सॉइल। अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करें तो आप देखो पिंक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है पूरा। Yes, ma'am. तो वो कहाँ दिख रहा है आपको? गुजरात में, गुजरात में। मध्य प्रदेश में, फिर मैम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। हाँ आंध्र प्रदेश में भी आपको दिख रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना, मैम नीचे कर्नाटका, कन्याकुमारी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु। सब जगह पे आपको ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो दिस सॉइल इज मोस्टली ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है आपको? महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना और थोड़ा सा तमिलनाडु, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। तमिलनाडु जो, हाँ इसमें नहीं दिखाया गया है, तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल इज वेरी गिफ्ट ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमने पहले भी, हम जब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो यहाँ पे हर जगह पे पेनिनसुलर रीजन में आपको ब्लैक कलर का सॉइल मिलता है, राइट। दिस सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल। ये सॉइल भी वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया में है। वो बहुत स्टिकी होती है, पानी बहुत टाइम तक इसमें रिटेन करके रहता है, सूखता नहीं है जल्दी, लेकिन जब सूख जाता है तो बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, राइट।
So very sticky and fertile. It contains humidity for the prolonged time. Humidity मतलब पानी उसमें टिक के रहता है बहुत ज्यादा टाइम तक. It is formed from the metamorphic rocks and it is very useful for cotton cultivation. मेटामॉर्फिक रॉक्स में से ये सॉइल बनी हुई है. हमने बोला ना ये कौन से रॉक्स में से सॉइल्स बनती है, तो ब्लैक सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक्स में से बनी हुई है. एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन. सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉटन आपको इसमें मिलेगा. इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. दैट इज व्हाई इट हैज become famous as a black cotton soil. It is also known as a rigger soil. इसे rigger soil भी कहा जाता है. Right? It's another name which is the rigger soil. अब आप देखो रेड सॉइल. Ma'am, रेड what सॉइल is दिख रही meaning है of आपको? rigor? रिगर इज जस्ट अ नेम हैज बीन गिवन इट. रिगलथ में से आया है रिगर, मतलब जो पत्थरों में से बनती है उसे उसमें से जैसे ही उसे नाम दे दिया गया है रिगर. रिगलिथ हमने Okay, अभी ma'am. नहीं पढ़ा रेगलिथ, उसमें से ये रिगर नाम पड़ा है. इट्स अ साइंटिफिक नेम यू कैन से. ओके, नाउ रेड सॉइल. रेड सॉइल अगर आप देखो तो आपको कहाँ कहाँ पे रेड सॉइल दिखती है. पूरा आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखो, असम देखो, मिजोरम देखो, अरुणाचल प्रदेश देखो, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. तो ये सारे रीजन्स में आपको पूरा रेड सॉइल दिखेगा. और कहाँ रेड सॉइल दिख रही है आपको? मैम मेघालय तमिलनाडु, की साइड. गोवा, ओडिशा और झारखंड. मैम थोड़ी थोड़ी गोवा में भी दिख रही. थोड़े थोड़े गोवा में भी है. राइट. तो रेड सॉइल अगर मैं आपकी बात करूं तो रेड सॉइल मोस्ट प्रोबेबली आप देखो तो नीचे साउथ के स्टेट्स में सबसे ज्यादा दिखती है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी. जैसे कि गोवा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड हाँ, है. आंध्र प्रदेश में भी. हाँ, आंध्रा में भी है. तो ये सारी जगहों पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी. अब इसका कलर क्यों रेड है? क्योंकि ये दो रॉक्स में से बनी हुई है, एक इग्नियस और एक मेटामॉर्फिक रॉक. ये दो रॉक्स में से ये रेड सॉइल बनी हुई है, इसीलिए इसका कलर रेड है. अब रेड क्यों है? रेड इसलिए है क्योंकि इस मिट्टी में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, फेरस कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये है ना रेड कलर का है. मतलब आयरन जिसमें आपने देखा होगा कभी भी आयरन को जंक लग जाता है तो रेड कलर का कुछ निकलता है, उसे जंक कहते हैं. राइट. तो मैम रस्ट. वो रस्ट. राइट. तो रस्ट रेड कलर का नहीं देखने को मिलता, तो इसीलिए इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण, फेरस कंटेंट यस, बहुत मैं ज्यादा आयरन होने में के कारण जब मैंने वो उसमें रेडिश जाके ब्राउन कलर. reddish brown color. Yeah. So that is the reason it is a red of color. So such soil is found in region of igneous and metamorphic rock. Its red color is due to the ferrous and other humus content. The soil is a porous and fertile. Porous का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खड्डे होते हैं, बहुत हवा भरी हुई होती है इस मिट्टी में, इसलिए ये porous मिट्टी कहा जाता है. And fertile. Such soil is seen in Goa, Tamil Nadu, Karnataka, आंध्रा, उड़ीसा एंड झारखंड. ये इस जगहों पे सबसे ज्यादा आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी. कैन यू सी दैट? ओके. अब उसके बाद आया लैटराइट सॉइल. लैटराइट सॉइल हमारी कंट्री में बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगी. मोस्ट प्रोबेबली ये ईस्ट और साउथ में ही है. जैसे कर्नाटका है, केरला है, वहां पे आपको थोड़े पार्ट में देखने को मिलेगी. फिर आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी. तो लैटराइट सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? इन सब जगहों पे आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगी. राइट. अब लेटराइट सॉइल की अगर मैं बात करूं तो लेटराइट सॉइल डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन. मतलब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, मतलब अति बारिश, मतलब पानी ही पानी, बारिश ही गिरती रहती है, तो वहां पे क्या होता है, ये मिट्टी पानी के साथ बह जाती है. राइट. और उसके कारण जो मिट्टी बनती है दैट इज नोन एज द लेटराइट सॉइल. मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होती क्योंकि अपर लेयर तो मिट्टी की बह ही जाती है. राइट.
तो एक्सेसिव पानी के कारण इस मिट्टी में कुछ भी नहीं होता है। हेवी रेन के कारण द ह्यूमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंडेड, मतलब खत्म हो जाता है, या फिर होता है तो वो लोअर स्ट्रेटा पानी के साथ वो नीचे चला जाता है, तो पत्थरों के साथ वो मिक्स हो जाएगा तो वैसे भी काम नहीं आएगा, राइट। सो इन द डिसेंडेड इन द लोअर स्ट्रेटा विच इज कॉल्ड लीचिंग, लीचिंग कहा जाता है। जब आपकी जो अच्छी वाली मिट्टी है पानी के कारण वो अंदर धस जाती है, मतलब अंदर चली जाती है, तो उस मिट्टी का कुछ काम ही नहीं रहता, राइट, उसकी कोई फर्टिलिटी ही नहीं रहती, तो उससे लीचिंग कहा जाता है। As the soil contains less humus, it is less fertile. ये बहुत ही कम फर्टाइल सॉइल है। मोस्ट प्रोबेबली इससे है ना ईंटें बनाई जाती है, क्योंकि लेटराइट सॉइल का मतलब लेटर, लेटर मतलब ब्रिक, ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लेटर, लेटर का मतलब होता है ब्रिक। बहुत ही हार्ड होती है ये सॉइल, मतलब पत्थर बन जाती है सूखती है तो इससे लेटराइट सॉइल से सबसे ज्यादा ब्रिक्स बनाई जाती है। The red sandstones contains iron and aluminum. इस मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम है, right? The erosion of this rocks result into the red color. और जब इसमें आयरन और एल्यूमिनियम इतनी ज्यादा है हाई कंटेंट में कि ये जब मिट्टी पानी के साथ मिक्स होती है ना तो लाल कलर की दिखती है। Such soil is found in the mountainous region of Deccan, Karnataka, Kerala, Odisha, and some part of the northeast. मतलब माउंटेनियस रीजन में आपको ये मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट। तो ये है हमारा लेटराइट सॉइल, राइट। अब हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या है? माउंटेन सॉइल आपको माउंटेन्स में मिलेगी सबसे ज्यादा, जैसे कि शिवालिक है, हिमालयाज है, राइट, वहां पे आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। ह्यूमस ह्यूमस कंटेंट इज मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट। अब माउंटेन सॉइल का मतलब माउंटेन्स, माउंटेन्स में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे? बहुत ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मतलब पेड़ पेड़ पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे, राइट। सो इट डिफर्स फ्रॉम, पर हर जगह पे ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पेड़ हो, कहीं पे पेड़ होते, कहीं पे एकदम पेड़ नहीं होते माउंटेन्स पे। तो humus content is more due to the forest, although it differs from place to place. Humus का मतलब होता है कि जो पेड़ और उसके जो पत्ते होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं मिट्टी के साथ, वो humus बनाते हैं, राइट। वो बहुत अच्छा होता है सॉइल के लिए। Heavy rain and humus content from the top soil, and place to place. Such soil on Shivalik ranges is less fertile and less developed. अगर आप शिवालिक रेंजेस में चले जाओ इस सॉइल के साथ, तो यहाँ पे इस सॉइल बहुत ही लेस डेवलप है, मतलब कम फर्टाइल है, अच्छी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पत्थर है और ये सब है, इसलिए यहाँ पे शिवालिक रेंजेस में इसको लेस फर्टाइल है। The soil is sandy and porous and does not contain humus. जो शिवालिक रेंजेस की सॉइल है वह बहुत ही सैंडी है, मतलब मिट्टी जैसी है, हवा की एकदम सूखी मिट्टी जैसी। पोरस है, मतलब पानी उसमें भरा हुआ रहता है, हवा उसमें भराई रहती है, और ह्यूमस नहीं है, मतलब फर्टाइल नहीं है। Such soil is found in the mountainous region of the country. कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही ये माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर स्टेट, इन सब रीजन में आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। इसके बाद आई डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पानी कम गिरता है, दैट इज नोन एज एरिड रीजन, अरिड रीजन, राइट। एरिड रीजन और सेमी अरिड रीजन, जहाँ पे पानी बहुत ही कम गिरता है, दिस रीजन इज नोन एज अरिड और सेमी अरिड रीजन। वहां पे आपको ये सूखी मिट्टी ज्यादा, गुजरात में आप देखो तो सूखी मिट्टी है, राजस्थान में देखो तो आपको सूखी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो वहां पे आपको सूखी मिट्टी देखने को एकदम रेती जेवी, रेती के वे, so that is सूखी मिट्टी you can say. गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, अगर आप मैप में देखो तो आपको ब्लू कलर की सॉइल दिखेगी, राइट। थोड़ा सा पंजाब में पार्ट है, थोड़ा सा हरियाणा है, थोड़ा सा हमारा गुजरात का जो कच्छ पार्ट है, वहां पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। मैम राजस्थान का भी है थोड़ा सा।
हाँ, राजस्थान है, राजस्थान तो पूरा ही है। तो और गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। द सॉइल हियर इज मोर अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब नमक ज्यादा है इस मिट्टी में। अल्कलाइन का मतलब होता है मोर सॉल्टी एंड हैज लेस ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट है ही नहीं, सूखी है पूरी, राइट? तो ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है। एग्रीकल्चर हैज बीन पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरिगेशन। अगर आपके पास पानी अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो इसमें आप मिट्टी में अच्छे से आप उगा सकते हो कुछ भी, राइट? तो इरिगेशन है तो प्रॉपरली आप उसको उगा सकते हो। Thus, a large diversity in soil of the nation is seen due to the diversity in climate and relief feature. इसीलिए हमारी मिट्टी बहुत ही अलग अलग तरह की आपको पूरे इंडिया में दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल फीचर्स अलग है, इसी के कारण हमारी मिट्टी भी अलग है। समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. कोई डाउट है बच्चा? No doubt. No doubt. हाँ? No doubt. नो डाउट। No doubt, ma'am. Sure, ma'am. मैम मुझे इरोजन का मीनिंग समझा। हाँ, इरोजन का मतलब क्या होता है? ये जो थिन लेयर है मिट्टी की, ठीक है, अगर पानी आया तो पानी के साथ मिट्टी बह गई ऊपर की, तो उसी में फर्टिलिटी होती है, तो वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वाटर के कारण वो सॉइल इरोड हो गई, मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, उसको इरोजन कहते हैं। हवा आई, हवा के साथ थिन लेयर ऊपर की मिट्टी बह के चली गई हवा के साथ, तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। कि जो जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, जो पानी और हवा के कारण वो बह जाती है उसके साथ, तो दैट इज नोन एज अ सॉइल इरोजन। ओके मैम, थैंक यू मैम। And what is the meaning of lower strata? Lower strata means a layer which is very close to the river, which is very close to the river, that is known as a lower strata. अब जब नदी के पास जाते हो तो आपको नदी हर जगह पे दिखेगी, नीचे एकदम भी देखेगी, नदी का तट दिखेगा, उसके पास जो मिट्टी होती है उसे खादर सॉइल कहते हैं, राइट? तो दैट इज नोन एज अ खादर Ma'am, सॉइल। ma'am, what is alkaline? Alkaline means a salt. Salt means the content soil. Soil content with soil. Salt is known as a alkaline. जिस मिट्टी में बहुत ज्यादा नमक होता है, that is known as a alkaline. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रन ऑफ कच्छ व्हाइट कलर का क्यों है? रन ऑफ कच्छ वो रन है, डेजर्ट है, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो दैट Yes, इज द ma'am. अल्कलाइन, दैट इज ए अल्कलाइन कंटेंट, वो उसे अल्कलाइन करते मैम हैं। मैम ये जितनी भी सॉइल है उस सब सॉइल से एग्रीकल्चर हो सकता हाँ, सब सॉइल में एग्रीकल्चर होता है और हो सकता है। है। ओके मैम। Okay, ma'am. Now whose lecture is right now? Ma'am, no lecture is there. No मैम lecture. नो Now लेक्चर। Ma'am, 9 GSB no. okay, now CBSE will be having. Okay, fine. So you can leave the class. बाय मैम। Yes. बाय Bye, ma'am. मैम। ओके मैम, बाय। Bye, ma'am. Mahi, Angel, Tanvi, Prisha, Hetvik, Krivan, Jainam, CBSE students, right? Yes, sir. Yes. Great. Yes Okay, so what are they doing in your school? Sir, in school we have started preposition. Sir, tomorrow is English exam in our school. That's Oh, why Angel, right now revision is going on in the school. Angel, right? Angel, you have English exam tomorrow? Yes. Okay, okay. And what is the syllabus that has been there in your exam? In behind there is chapter lesson 1, lesson 2, poem 1, poem 2, and in movements lesson 1. And in English diary entry, story writing, comprehension, Okay, interpreted grammar. okay. Has this been done here? Yeah. Yes. Okay. Any doubts in specific topic of this exam, beta? No, sir. All right, fine. Acha, Ishwar and the storyteller is completed.
Sir, we were on beautiful, the truly beautiful mind. Yes, I agree. But is this story completed? Yes, Ishwaran, sir. the storyteller. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, I request everyone to turn on the cameras, everyone quick, so that I can see you all. Yes, am I visible to everyone? Yes. Yes, sir. Okay, perfect. And my voice clarity is also clear. Yes, sir. Yes, sir. Just give me a second, okay? Okay, so I think the truly beautiful mind we started. How many of you were online just Linda last class and we started with the truly beautiful mind? Hmm? I think we did begin, right? So just give me a moment till the time I display the screen of your text copy. Okay? So I'm sharing the screen to you. So if you can see it, just let me know. Okay, beta? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. So I think we did begin, with something. I think it was either one paragraph or, Sir, we have multiple of not it. begun anything. We haven't? We met you first time. Not actually, but I think Angel, remember, I think you were in Naranpura. Sir, I was there in Naranpura. I was also there in our. Hmm. See? Anyways, but we'll begin it from the beginning itself, right? So there is not at all any issue, right? So I want someone who is a good Sir, reader. may I read Angel? Angel, I think last time it was Krish who read, remember? Yes. Yes, okay. So just a minute. Okay, has everyone got this text copy at their place? Yes, sir. Yes. Fine. Chalo. Angel, you can read. You can start from before you read, second point. Yes? Yes. Yeah, please start. At the age or from the starting only. No, 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 no. In before you read, second point. We shall now read about. Yeah? Could you see that? Which, sir, can you show me the line? I I, have, I have already shared the screen. so from Albert Einstein or from at the age of the. Beta, ऊपर before you read hai. Could you see that? Okay, okay, In that second point, you have to read. okay. Yeah. We Okay. shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick Succession. succession four groundbreaking papers about light, the motion of the particles,
the electrodynamics Dynamics. dynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but Okay. changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, Cosmos. and transformed the name Einstein into a synonym for genius. Okay, fine. See, that here we are going to learn about a German civil servant. So we know him by Albert Einstein, and about 100 years ago, the kind of storm that he brought, to the society about his quick succession of four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space. The kind of write up that he had in that journals, okay, and it changed entirely, the theory or the belief of the people in the force of understanding the space, time, and the entire cosmos. And we know that name by Einstein, and that is actually synonymous to genius. 50 years after his death anniversary, Albert Einstein's genius still reigns. Baby Albert Einstein ki genius, it rules around the world. All right, there is no other genius born as great as Einstein in this world. All right, Angel, you'll have to read it, with speed. Angel, can you hear me? Okay, sir. Because Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Ulm. Without any indication that Indication. he was destined for greatness. On the Con- his contrary. his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too large. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself. Okay. So what do we know about Einstein is that he was born on 14th March 1879 in one of the German cities called Ulm, and that too without any kind of direction or indication that what kind of greatness that he was going to achieve in his life. His mother, quite contradictory, to what Einstein is in this world today. His mother called him a freak because his head was quite bigger than the rest part of his body. Around 2.5 year, it was 2.5 year, but still he was not able to talk. Okay, and finally when he started learning or when he started speaking, he started uttering everything twice. Einstein did not know what to do with the other children because he was not that kind of interactive child, and his playmates or his friends often called him Brother Boring. So the youngster played by himself. He was playing by his own self much of the time. ज्यादातर वो अपने साथ ही खेलने का पसंद करता था. He especially loved mechanical toys. उसको mechanical toys कुछ ज़्यादा ही पसंद थे. Looking at his newborn sister Marja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ठीक है, वो इतना डायरेक्टेड था मैकेनिकल टॉयज से कि वो हर एक चीज को मैकेनिकल की नजर से ही देखता था. तो जब उसकी सिस्टर पैदा हुई तो उसने बोला कि ये बात तो सब ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं. So you see the kind of domination that he had, over the mechanic, the word mechanic, क्योंकि उसके हिसाब से हर एक चीज को पहिए होने चाहिए. ठीक है ना. तो उसकी सिस्टर जब बॉर्न हुई थी तब वो देख रहा था कि यार इस ये सब तो ठीक है, इसके व्हील्स कहाँ हैं. All right, so that kind of dedication that he had towards the mechanics. Over to you, Angel.
A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession won't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violist maintaining this skill throughout his life. Yes, But continue. but but Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munch, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's Regimentation. regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Okay, fine. When we are talking about his academics, it was said that उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसके फादर को ऐसा कहा था कि आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी चीज में जाएगा वहां पे उसको सक्सेस हासिल होगी नहीं। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से वो करीबन 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख लिया था उन्होंने। स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन इन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज उसकी मॉम की इच्छा थी कि उसको वायलिन आना चाहिए। और उसके बाद ही हैपन टू बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर violinist. And what is an amateur? Doing something for personal enjoyment rather than as a profession. मतलब खुद को जो चीज मजा आती है ठीक है उस चीज को उस तरीके से लेना है। मतलब यहाँ पे जब आइंस्टाइन यूज्ड टू प्ले वायलिन वायलिन ही यूज्ड टू लव and he loved playing violin. That's why he was an amateur violinist because he loved playing violin. He used to play violin, and this he kept on playing till the time he was dead. Okay, लेकिन देखने जाओ तो आइंस्टाइन इतना भी खराब स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। ओके, म्यूनिक में वो एक हाई स्कूल में भी गया जहाँ पे वो ऐसी जगह थी जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली, जब आइंस्टाइन खुद 15 महीने के थे तब शिफ्ट हो गए थे। लेकिन somehow he also scored very good marks in every subject. हर एक सब्जेक्ट में उनका स्कोरिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा था। लेकिन हमेशा उनको स्कूल के प्रति नफरत रही है। ही यूज्ड टू हेट द स्कूल। why? Because he was not able to take away the discipline or the extreme rules and regulation. He was not able to bear it. So he used to hate the school regimentation. स्कूल के नियम कायदे कानून उसको पसंद नहीं थे। एंड ऑफन इसकी वजह से वो टीचर्स के साथ भिड़ जाता था। यूज्ड टू फाइट विद द टीचर्स। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को घुटन सा होने लगा कि ये मैं कहाँ पे हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। द प्लेस वेयर आई एम, दैट प्लेस इज नॉट मेंट फॉर मी। when you are at one place and you don't like that place, you feel like you want to get out of this at any point of time, you see, as early as possible. I'm sure किसी ना किसी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही होगा। कब कोई जगह पे जाते हो ना तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मन नहीं लग रहा है और मुझे यहाँ से और जल्दी से मेरे जल्दी साथ हुआ निकल। यस, तो यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? स्पेशली जब हम फैमिली के साथ जाते हैं ना कहीं पे, कोई रिलेटिव्स के घर पे, तो अपने पास सर कोई। मेरे साथ है ना ये प्रीवियस जब मैं ये स्कूल में नहीं थी पहली स्कूल में थी तब हुआ था कि यस मैं पहले स्वस्तिक में थी। सर वहाँ के रूल्स हैं बहुत ही बर्डन देते हैं। होमवर्क में जो करना है वो स्कूल में जो करा है वो होमवर्क पे करने का, होमवर्क में जो करा है वो स्कूल में वापस करने का। यस। इसलिए टीचर्स भी सर बहुत मारते थे अरे अरे अरे, सबको। कोई बात नहीं, पर यहाँ पे हमको है ना, देखो हर एक कोई चीज एक सा होके गुजरता है, ठीक है ना? तो आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि यार ये जगह तो मेरे लिए बनी ही नहीं, मुझे यहाँ पे दम घुटता है मेरा, ठीक है ना? तो ही लेफ्ट द स्कूल। अपने भले के लिए उसने वो स्कूल छोड़ दी, ठीक है ना? लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ओवर टू यू एंजल। Sir, can I read? हु वांट्स टू रीड? Mahi. Okay, so Angel, you take a break. Let Mahi can read. Okay. The previous year, Albert's parents had moved in Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion,
and Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. mustache. Okay, fine. Pay attention now. उसके अगले साल क्या हुआ था कि आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे दे मूव टू मिलान. ठीक है, मिलान इज वन ऑफ द प्लेस इन यूरोप. ओके, तो मिलान शिफ्ट हो गए एंड लेफ्ट देयर सन्स विद रिलेटिव, और उनके बेटे को अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे छोड़ के आए. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ही भारी डिस्कशन हुआ, उसके बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. कई सारा डिस्कशन हुआ, घमासान हुआ, उसके बाद ये डिसाइड करने में आया कि आइंस्टाइन को अपना एजुकेशन एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड कंट्री में करने देने की अनुमति मिले. ठीक है, और ये ऐसी जगह थी जो जो पुरानी जो स्कूल थी उसकी, म्यूनिक, उससे कुछ ज़्यादा ही लिबरल थी. दैट मीन्स दैट दिस स्कूल had not that amount of restriction that the earlier school had in Munich. Okay, so here he could have his own wish to do. And probably if you talk about his academic records, that he was quite good in mathematics and he loved physics like anything. So what happened later, that after finishing his school, he decided to study in the university in Zurich. ठीक है, स्कूलिंग के बाद ही डिसाइडेड कि मुझे ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है. लेकिन साइंस एक ऐसी चीज नहीं थी जिससे आइंस्टाइन प्रभावित हुए थे, क्योंकि आइंस्टाइन खुद एक यंग डैशिंग यंग मैन थे जिनकी मूछे, वो वॉलरस होता है ना, आपने देखा वॉलरस, सी और ना सी Yes, लायन, sir. हाँ, तो उसके जैसे उनके मूछे हुआ करती थी. So he was quite, inclined towards it. Though, let us see that he not only liked studying, science, but there was more than that that he liked. If you could see on your screen, on your left-hand side, Einstein was, looking like this at the age of 21 in 1900. But by the time he reached to 1945, 55, we know how he looked like. Okay, and this is the last picture that we have of him. Okay, because he died in 1955. But if you see, in the year 1900, he looked very handsome and very charming. Okay, and with a best acknowledgement of having good records in academics, and he loved mathematics and science. Let us see what else did inspire Einstein. Over to you, Mahi. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Mary, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those Philistines. Philistines, those people in his family, and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affections into words. Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. Okay, fine. All right. So what we know from this, two paragraphs is that beyond mathematics and beyond science, he lived something. Let us see what he lived for. He also felt a special interest in a fellow student. So besides having interest in mathematics and science, he also started having an interest in one of the fellow students called Mileva Maric, and she was found to be a clever creature. So, kind of intelligent one from the point of view of Einstein. And this young Serb means Serbian. Okay, she was from Serbia. Okay, so this young girl called, Mileva Maric. Okay, she was a young Serb and she came to Switzerland
because the university in Zurich was one of the few in Europe where women were allowed to get degrees. Probably in their own country they might not have been allowed, but here the university in Zurich typically allowed Mileva to pursue her educational degree. Okay, Einstein saw her in her ally against the Philistines. Ally means a friend or an associate against the Philistines. What are Philistines? A word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature, or music. ठीक है ना तो मतलब she was having a kind of soft corner for those kind of people who didn't love art, literature, or music. Okay, now you see both of them were a science students. Okay, so none of them knew how to express their love and when it comes to writing. Okay, because those two were tremendously genius in science. Okay, but when it came to writing in the form of literature, they were quite very extraordinary because they ended up mixing the science words into the letter of expressions. So in one of the letters which was written by Einstein, he wrote that how happy and proud I shall be, कितना मुझे happiness और proud होगा जब when we both have brought our work, जब हमने हमारे काम को work on relativity to a victorious conclusion, काम को हमने सही तरह से अंजाम दिया है. But when he's saying like this, the words that he has chosen is from science, relativity, you see, to a victorious conclusion. That means he expressed his love in by using the scientific words. Okay, because both of them, see, either people are good in science or people are good in art, literature, and music. Or if you are good in both of them, then that's the deadly combination, you see. And ये हानिकारक होगा समाज को, because in both the sides you are going to create a dangerous effect. You are also good in science and you also love poetries, you also love literature, and you also love music. Now if you see the difference between being a science student or from science stream, uh, you know science is all about believing in the statistics and conclusions, okay, and theories and practicals. Whereas you don't need any kind of physical form to understand art, literature or music. Physical form in a way that you cannot see literature, right? Can you see walking literature? Can you see the art talking? Like how does it look like? Can you see music? What is the color of a music? No, right? So these are the abstract feelings, right? But science तो proof में मांगता है, ठीक है ना? Science talks about proof, evidences, right, on the grounds of which the theories can be explained. So both of them were found exchanging the letters of expression of love using the scientific words. Okay, yes, over to you, Mahi. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as as a technical expert in the patent office in Bonn. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Theoretical physics, yes. Okay, understand this now. It says clear picture about Einstein that in 1900, when Einstein was of 21 years, he was university graduate, but still he didn't have any job in his hand. In earlier days, it was found that when you pursue your education, immediately you should be employed, or you should get a kind of job that suits to your educational qualification. So he was a university graduate, but still, he was unemployed. That means no one recruited him, or he was not shortlisted as an employee to work anywhere. Okay. He worked as an assistant teacher. So he worked first as a teaching assistant,
Then, he gave private lessons and finally secured a job in 1902. 2 साल लगे. It took 2 years for him to figure out a job. Okay, as a technical expert in the patent office in Bern. बर्न की एक पेटेंट ऑफिस में उसको एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे रिक्रूट किया. Yeah, so this company happened to recruit Einstein as a technical expert. Okay, with while he was supposed to be assessing other women, or while he was supposed to assessing other people's invention. तब जब यहाँ पे when he was given this job of technical expert at a patent office, his job was to assess other people's inventions. But then somehow he started investing in his own work. He started having his own inventions, and he used to work upon his own ideas and secrets, right? And more or less उसने तो शायद ये भी सुना है किसी ने कि वो अपने जो डेस्क जहाँ पे he was sitting, he jokingly said his desk to be a bureau of theoretical physics, जहाँ पे उसने theories develop की थी. तो जब his job was to assist people, he was also silently and gradually developing his own theories at his own desk, and to which he called his that theories as the theoretical physics, bureau of theoretical physics. Understood? Continue. Sir, now can I read? Here. Here wants to read, but I cannot see you here. Have you turned on your camera? Sir, my camera is on only. Okay, fine. Yes. So now Mahi, you take rest. Let here be reading. Okay. Yes. Over to Yes. you. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equals to mc squared. Yes, so I'm sure as a science student, you must have come across this, a formula, or between mass and energy is equal E is equal to mc square. Okay, so one of the famous papers of Einstein was, on special theory of relativity in the year 1905, and uske hisab se what he wanted to say was that time and distance are not absolute. Okay, indeed, they are two perfectly, even if there are two perfectly clocks, which have been then, they cannot even show the perfect time at the same time. Even if after some time, they journey back together, they'll not, show the perfect time at the right time. Okay, that means इसके हिसाब से इसके ऊपर से the rule came as E is equal to mc square, distance and time. In the mathematical equation, E stands for energy, M stands for mass, and C for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh kilometer per second. You see the speed at which the light travels, it is 3 lakh kilometer per second. You see what kind of dangerous light is. It travels at the speed of 3 lakh kilometer per second. So जो कितने speed से जाती होगी light, है ना? So that's Yes, the thing sir. that you have to understand. So छोटा सा एक अच्छा सा मजाक भी उसने किया है that when you sit with a girl, nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब आप एक अच्छी सी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हो, आपको लगता है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे हो, right? But when you sit on a hot stove for 2 minutes, again, जब आप गरम गैस के ऊपर 2 मिनट के लिए भी बैठते हो, तब को लगता है कि 2 घंटे से बैठे हो. वो relativity है. Okay, so he jokingly gave this example, but somehow it is true, right? Like when we are sitting, not only it's about sitting with the loved ones, it's about sitting with your father, mother, or when you're sitting with your best friends, having good times, you feel that good times pass very quickly. How many of you feel like that? You can raise your hand like this, right? That when you're sitting with a good person, or when you're sitting with a good company, and you feel like the time should stop, it should not keep on running. Let this
time be put into the pocket, right? But no, the time still will go ahead. Whether it is a good time or the bad time, the show must go on, right? So that's the theory of Einstein, giving the example of a beautiful girl, right? Let us proceed further. Over to you here. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva. Mileva. Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said. Einstein put the wedding off. The pair, sir, shall I continue? Continue, continue. The pair finally married in January 1903 and had two sons, but a few years later the marriage faltered. Faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1990. Einstein married his cousin Elsa the same year. All right. So this two paragraph very much talks about, his personal life and how imbalanced it was, because somehow, that's a thing about genius. All right. They cannot, handle, personal life when, the professional life is at peak, peak of the career. We can very well say that, Einstein was doing really very good in his professional life, but somehow forgot to maintain equal balance with his personal life as well. So, when he was busy solving the most difficult problems in physics, his private life was, kind of started to getting disturbed. Okay. So basically, Albert wanted to marry Mileva right after his studies. So right after he was done with his education, he wanted to get married to Mileva. But then, his mother was against this wedding because there were two reasons. First reason was that Mileva was already 3 years older to Einstein. And second reason, which actually gave pain to her mother, his mother, was that she was, equally intelligent as Einstein. In one of her sentences, she says that, she is a book like you. We come to know the kind of, uneasiness that his mother might have felt, or the kind of, you know, quite competitive what her mother might have felt like. So because of this reason, Einstein called off his wedding. Called off his wedding means canceled the wedding. But then the love didn't stop there. The pair finally married in the year 1903. So Einstein being, I guess, 23 years old, right? And they both had two sons. But after a few years, the marriage again started, getting disturbed because somehow, Mileva thought that her ambition, her skills, her intellectual have been just going waste. It's getting no use. When someone is so passionate about something in life, and when you take away that passion from them, you feel that, they feel like, they are in the slave, right? Understand this. Okay, so that's what, Mileva started feeling like. She was losing her intellectual ambition, uska jo, intellectual habit tha. Okay, she started losing that. And after years of constant fighting, कई सालों तक झगड़ा करने के बाद, the couple finally got divorced. They both decided to get divorced, and it was a mutual decision, right? And then later on, what happened? The same year, Einstein got married to his own cousin called Elsa. All right, you can continue now. Here, paragraph number 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1950, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution.
Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Yes. So now what happened that the moment he got married second time, it looked like now, his success started, he started tasting the success. Okay. And immediately, the world, came to know about him. How in 1915, he had published his general theory of relativity. That means what he believed in the form of relativity, he published in one of the journals, wherein he provided a new interpretation of gravity जहाँ पे इसने gravity की कुछ अलग ही definition दी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. And what made it accurate was the eclipse of the sun in the year 1919. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars and would be deflected through the sun's gravitational field. So it was Einstein, What did he do? He had correctly calculated in advance. What did he correctly calculate in advance? The extent to which the light from fixed stars would be deflected. Okay. Deflected means what? To change the direction. Okay. So, he calculated, that the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational फील्ड ठीक है सन का ग्रेविटेशन इतना है कि स्टार्स के जो लाइट आती है अर्थ पे वो डेविएट होगी डाइवर्ट होगी and this was proclaimed as a scientific revolution by the local journals. Okay, it was a kind of scientific revolution. Okay, Einstein received the Nobel Prize for Physics in the year 1920, and so for the kind of Nobel Prize that he was awarded, he received it at the age of what? At the age, so we don't know, but in the year 1921, he was showered with honors and invitations from all over the world. Okay, you see the kind of success growth that he had. He started, getting invitations and honors throughout throughout his career, and people started knowing him. And of course, even the journalist or press also used to applaud his work. Continue. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Yes. Continue, please. You can finish till 17, okay? At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he wanted a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Sir, may I continue? Complete reading it. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Yes. Okay. So let us study about him. He's about last 3 paragraphs. Okay. So what happened that, of course, the kind of revolution that he had brought to science, it was known as the scientific revolution, for which he also received Nobel Prize in the year 1921. And he was invited, and honored all over the world.
And the press also appreciated him. Who's this? Then in between it is showing that please move this window away from the shared application. I understand, but there is no other option that we are left with. How clear? Has it gone? Yes, sir. I Okay, thought fine. that it is problem in my No, no, no. It's a problem when I display the Zoom thing. Your PC is okay. Don't worry. Okay. Yeah. So when the Nazis came to power in Germany in 1933, and you know who are the Nazis, right? Nazi entirely was led by Adolf Hitler. Okay. And Adolf Hitler, we know who he was, right? He was responsible for the entire destruction of the Jewish as a community. Jewish in, in Hindi or Gujarati, we call it as Yahudi, right? Like Israel, right? Israel people, they are the Jewish. Okay, Israel people are who? Who are the Israelis? They are the Jewish people. They're the Jewish community people, right? So for your kind information, you should know this. Okay, yeah. So when the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. Einstein जो थे वो United States shift हो गए 1933 में. Okay, because Nazis came to power in Germany. 5 years later, उसके 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. कि जब अमेरिकन फिजिसिस्ट को जब पता चला कि भाई ये जो एडोल्फ हिटलर है, ये जो नाजी लोग है, वो तो न्यूक्लियर फिशन तैयार कर रहे हैं बर्लिन में, तब अमेरिकन फिजिसिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और इसके चलते कई सारे लोग भाग भी गए थे इसकी हुकूमत के चलते. जस्ट एस आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए थे, वैसे कई सारे लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही थे कि जो दे डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम जर्मनी टू अनदर प्लेस. ओके, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज, क्योंकि अब नाजी से उनको डर लगता था, क्योंकि उन्होंने फाइनली एक एटम बॉम्ब को कैसे यूज करना है वो उनको पता चल गया था. अब देखो ट्रिक कैसे यूज की अमेरिका ने. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग के कहने से आइंस्टाइन ने अमेरिकन के प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, जहाँ पे उन्होंने अमेरिका को वार्न भी किया, कभी ये सिंगल बॉम्ब ऐसा है कि पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और शायद पूरे पोर्ट को एक साथ, पूरी टेरिटरी उनकी जो पूरी jurisdiction है पूरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है. So rather than having a peace command with the Germany, what did America do? America did have something different. His words did not fail to have an effect. उनके वर्ड्स की असर तो हुई. द अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. अमेरिका ने सीक्रेट में प्रोजेक्ट बना, वो एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट बना दी. फर्क जर्मनी और अमेरिका में और कोई नहीं था. आइंस्टाइन को लगा कि चलो मैं अमेरिका को बताऊंगा तो सतर्क तो हो जाएगा. But in response to what Einstein warned American president ordered to develop an atomic bomb on a secret mission project. और डाला भी तो कहां पे डाल दिया? जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में डाल दिया अगस्त 1945 में, जिसके चलते we know that the terror effect is still seen in Japan, right? One of the cities called Hiroshima and Nagasaki is because the kids born, they still have deficiency problem in their body. You see the kind of impact that atomic bomb might have had, that the generations and generations later also the kids are born with physical or mental deficiency. Imagine, right? So अब देखो कि एक एटॉमिक बॉम्ब, ये तो उन दिनों की बात है, उस टाइम का एटॉमिक बॉम्ब. अब सोचो आज का एटॉमिक बॉम्ब कितना डिस्ट्रक्शन ला सकता है विथ एन एडवांस्ड इफेक्ट. बिकॉज मानते हो कि टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ होगा एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में, है ना? मानते हो ना इतना तो? अब सोचो कि उस टाइम के एटॉमिक बॉम्ब बनाने में उसकी इफेक्ट अभी तक दिख रही है, जापान के लोग भुगत रहे हैं. सोचो कि अभी एटॉमिक बॉम्ब बनेगा या फिर एक्सप्लोड होगा ना, तो आधी दुनिया तो ऐसे ही उड़ जाएगी, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक डिस्ट्रक्शन. So you can very well imagine that atomic bombs
dropping atomic bombs is not the solution. You have to understand this. ओके जब तक बात सामने बैठ के या सामने सामने बात करने से अगर सुलह हो जाती है then there is nothing wrong because dropping an atomic bomb should not be even your last option. It should be the extremist last option. Okay. तो आइंस्टाइन को लगा कि यार मेरे ऐसा वार्न करने से अमेरिकन प्रेसिडेंट की आंखें खुल जाएगी और वो कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे, लेकिन इन्होंने तो हिरोशिमा और नागासाकी में ट्रायल बेसिस के ऊपर बॉम्ब डाल दी। तो आइंस्टाइन तो पूरा हिल गई ये मैटर को सुन के कि ये क्या था, ये तो मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्न करने के ऊपर। तो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव। अब इस बार उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा लेटर लिखा ऑफिशियली, ठीक है ना, यू नो यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड नेशंस को, यूएन, यूएन इज अ बॉडी, यूएन बॉडी, राइट? How many of you know UN body, United Nations, right? So now there was a big and massive official letter written to the United Nations. अब यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा, ये बताने के लिए कि भाई एक पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होनी चाहिए। देखो हर एक कंट्री की खुद की गवर्नमेंट तो है, राइट, बट उनको भी एक पूरा एक यूनिट होना चाहिए जो कवर करे या उनको कमांड्स या ऑर्डर्स दे जिनके अंडर हर एक कंट्रीज की गवर्नमेंट आए, ठीक है। तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो रेगुलेट करेगी किसको, जो कंट्रीज को जिनकी खुद की गवर्नमेंट है। अंडरस्टूड? अब समझ रहे हो, जैसे क्लास में हम मॉनिटर क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो भाई मॉनिटर का रोल ये होता है कि जो मिसचिवियस बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करे, लेकिन जो मॉनिटर्स को भी कंट्रोल करता है वो कौन होता है, क्लास टीचर्स, क्लास टीचर, है ना। तो आइंस्टाइन ने भी ये प्रपोजल रखा कि यार ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक क्लास मॉनिटर तो बनना चाहिए, ठीक है। वो क्लास मॉनिटर कौन होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, है ना, जो बाकी सब गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के तहत कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये सुझाव रखा उन्होंने आगे। In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, रूजवेल्ट के लेटर से टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी था बिकॉज यहाँ पे किसी को असर ही नहीं हुआ। आइंस्टाइन की लेटर की असर यूनाइटेड नेशंस में किसी को हुई नहीं, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 साल आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके, ठीक है। ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम्स थी तो वो बाकी सब लोगों के साथ इसका मास एजिटेशन करते थे, was opposing the ideas like this. Okay, so he was amongst the other people. He got united with the other people for the betterment of the society. Okay, and he fought against them to build an arm built up and on using or stopping the use of arms. Okay, because destruction, देखो weapons तो destruction ही लाएंगे, ठीक है, वो कभी peace लाएंगे नहीं। अब देख लो कोई भी वर्ल्ड वॉर उठा के देख लो, ठीक है, हमको उसमें से क्या मिला, हमारी लाइव्स चली गई, राइट, हमारे सोल्जर्स की लाइव्स गई है। सो वॉर कैन ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शंस, बट व्हेन यू टॉक फेस टू फेस इट कैन आल्सो ब्रिंग पीस, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, सर उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, ठीक है ना, उसके बाद तो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर तो बिना हथियार उठाए हो गया ना, जो चाइना ने किया है ना। आधी पॉपुलेशन तो वैसे ही कम हो गई बेचारी because of this COVID-19, right? So that was a very secret World War III without the usage of weapons, right? So anyways, let us get back. तो अपनी जितनी भी पॉपुलैरिटी थी आइंस्टाइन ने, तो उन्होंने पीस का मैसेज स्प्रेड करने में लगा दी, टू ब्रिंग पीस एंड डेमोक्रेसी अमॉन्ग्स द पीपल। लेकिन जब आइंस्टाइन ही डाइड इन 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. उनको एक विजनरी के तौर पे जाना गया, लोग उनको इस इंसान से जानते थे कि वो फ्यूचर का सोचते थे, ठीक है, और वो खुद इंटेलिजेंट थे, उनको प्रेजेंट की नहीं पड़ी थी लेकिन वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे, ठीक है। एंड ही ऑलवेज थॉट ऑफ बीइंग ओरिजिनल एंड आल्सो ही थॉट टू बी एंड ही वाज एन इंटेलिजेंट, right, and he thought in an intelligent way, and he was declared as a genius till from the time his death
till today, we consider Einstein as the synonym of genius. Understood? Any doubts? No, sir. Queries, dear students? I'll stop the sharing. I hope that you have understood this. Okay, there are still couple of you have not yet turned on the cameras, like Prisha, like Angel. The screen is black. Okay, like Dia, Dipti. Okay, the rest I can understand. Okay, dear students, did you understand today's chapter? Any doubts? Any queries? Understood? Yes, sir. Yes. So next time we may plan to take, a poem. Okay. So we will go at par like what Anshuman teaches. I will also teach accordingly. Okay. I don't know how many of you know. How many of you know me? Anyone knows me? Yes, sir. Who's this? Yes, sir. Darshil. Darshil. Is anyone called Darshil here? You can raise your hand who knows me. What is this? Mr. Patel. 1122 ID wale. Just tell me, how do you know me, beta? Patel Viraj. Sir, How we do you have know met me? offline. We have met offline last time. Sure. Yes, sir. We met Okay. offline. It's, no, I'm not talking about the offline thing. Before that, you don't, right? Fine, no issues. Now you will get to know me. Don't worry, we will be sharing the English teaching and learning sessions. Okay, I hope that today's session was quite interactive and interesting. Any doubts? We completed one chapter. So next time we may discuss the question answers of this chapter called Truly Beautiful Mind. Okay, have you understood the entire chapter? That means it Yes, sir. also allows me to have the mock test next time, yeah, or in the form of interaction. We'll discuss the questions and answers, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And tell me, are we, running parallel to your school's syllabus, or we are, lagging back or, leading ahead? Anyone's school, you feel that, sir, we are very much back? So we are going parallel. Mahi says we are going parallel. Okay. Today, Jainam is asking me something. Sir, you will send worksheet स्कूल to में है ना किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर स्टार्ट किया है आज Kavya. Okay. And which school you are into, beta? निर्माण सर स्टार्ट किया है आज किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर But I am asking you, you are in which school? निर्माण हाई स्कूल Nirman. Okay, don't worry, Kavya. Don't worry, Sir, we will my class be also with we your have school. started. Who's this? Sir, I'm Mitri. In my class also we have started prepositions grammar. Prepositions. Okay, okay. All right. Fine. So as we'll meet like this, definitely we will be covering topics one by one, and your syllabus will be covered. Don't worry. So we are just waiting for the regular schedule. So once the schedule is regularized, definitely we'll cover the syllabus one by one with proper and deep understanding. Okay. Uh, Janam is asking me, sir, you will send worksheet of the truly beautiful mind. What if we discuss the worksheet here? Yeah, and you can write question answers. We can discuss the worksheet. Because if I'll give you the worksheet at home, probably you may keep it aside, or you may solve it but from your point of view. But if I am displaying the worksheet here and we are discussing the worksheet live, that is definitely going to have a deep impact. How many of you agree with me? Raise your hand like this, right? So if we discuss the live worksheet, then definitely it is going to make a difference. Then if I will feel so, don't worry, I will then start sharing the worksheet also. Don't worry. Okay, but if uh, everything is going on perfectly while discussing the worksheets, I don't think so that I will be sharing the worksheet. Sir, Or you because can we have to submit it, na, that's why. where do you have to submit it? The center For that. in front. In center. Yes. About English. Okay, fine. I'll have words with Sakshi, whatever she says. Okay, then we'll revert you. Don't worry. Okay, because I actually know the system very half because I was on a break for 6 months.
So maybe if the new system is there, probably I am least aware of. But don't worry. I'll talk to Sakshi ma'am and let us see what she says, and then we'll proceed accordingly. All right. So, do you have any other class after this, dear students? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Whose class do you have? Yes, sir. Yes, yes. SS class. And who takes your SS? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jayesh Yes. sir. Yes, Jay. sir. Yes. Yes, sir. Yash sir. Okay. So maybe Yash sir has not yet joined. Okay. Maybe we'll wait for him because then I'll have to make him the host, and then only I can leave, right? Because then I have a class in 10th standard after this, exactly by 5:30. So you make someone host. Oh yeah, I can do that. Here, do one thing. I'll make you the host. Okay, so as soon as Okay, sir. you get a request of sir, you can add him and then you can make him the host, right? So you can Okay. tell that push sir Okay. waited for you, and then he made me the host, and then I'll make you the host. Okay, so I'm making you the host now. Okay, sir. Bye, sir. No, I'm yet there. Don't worry. Okay, yes. So here I make here the host. Right here. So Yes, sir. I have made you the host. You can add sir also, okay, as a host. All right. So that's it for today. Thank you so much. Goodbye. Take care. Have a great day ahead. See you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.